जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। टू ऑल व्यूअर्स ऑफ सभी दोस्तों को, सभी बंधुओं को स्वागतम हमारे ट्रूथ टेलर्स के चैनल का ये सेशन के लिए। लावण्या. So when each of us hear this name and the recent incident associated with the name, what goes in our mind? Just another case of attempted conversion, another case of misplaced delayed justice, just another case of a child committing suicide. Let me give a data report, latest report from the child, welfare. Every hour, more than 42 children below 18 years of age are committing suicide in India. मतलब जब तक ये सेशन खत्म होएगा ना, आपको 40 की अधिक तक बच्चे सुसाइड कर रहे हैं. I know it's very difficult fact to swallow, but that is the truth. Out of all this, Tamil Nadu, the state which we are going to discuss about, which is also called as very, it's a I don't know how to say this, but then it's a very fact that it is called a land of temples, which is still called as land of temples. It stands second in entire India consistently through years. Okay, so this particular case, are we going to call this child Lavanya's death as one among the other, suicides, and let it pass by after few days of Twitter hashtags, of shouting in the platform, and then the screaming, us screaming in the social media? This is not mere an isolated case of conversions. There are a lot of history behind it. There's a lot of background behind it. In this session, we look into the background, the history of case of kyun ho raha hai, and the agendas of various forces in action, and try to understand, more. We'll put in details and facts. Before I call in my friends and my fellow panelists of my T3 family or Tooth Trailer family, let me quote from an unknown. If a child below 18 commits suicide, it is not a suicide but a murder. With that, I welcome Sri Ujjwal Narain ji, and Advocate Sonia Raina ji will be joining us later to join me on today's discussion on this very topic of Lavanya. Jai Bharat, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Ujjwal ji. जय हिंद, जय भारत, अरुण जी और सभी दोस्तों को हर हर महादेव, जय श्री राम। महादेव जी. So, आपके before we start, आपकी कुछ your inputs on this, and then we'll start with the session, sir. It's a very, I know it's a long-winded topic, but then बोलिए sir. It's a very, very shocking kind of an incident, and the problem is, the irony is that this shock is not going away. It is getting repeated day after day after day after day. Tamil Nadu itself, there are so many cases happening, as well as all over India. We're getting a lot of similar cases happening wherein majority community is being targeted. I don't know for what and why unnecessarily target us. And particularly Tamil Nadu, the case is so hopeless. Tamil Nadu and even Andhra Pradesh, where the bloody the government, the powers that be, the state powers, the state apparatus, the state government is actually involved. They're lending support to all these kind of miscreants and these kind of elements. The state civil servants and police officers are openly conversing for religious conversions. I don't know whether the Constitution of India allows this. Yeah. Even the political leaders also. And the one single point agenda, whether it is through Christian militias or Christian missionaries or jihadi forces, it is just to attack Sanatani Hindus and Sanatan Dharma people
and attack our civilization, attack our temples, grab our land, take on our livelihoods. So this is happening in a very, very big way. So I would request our gang, our group, our family, especially senior people like Sunandaji, Nainaji, yeah, Shivani if you have any thoughts, please do come and express. And I think this is a very shocking case which shakes us to the core. That is my opening thought. When why Lavanya? Yeah, but the problem is there's not just one Lavanya. There's so many Lavanyas happening, and even when there are no the killing is not being done, or yeah, oppression does not lead to death. Even then, there are a lot of other operations which are doing. Like for instance, we heard last 2 months there were two cases. One at Gaya in Bihar, Kendriya Vidyalaya, and another in Bangalore city, Karnataka. wherein, yeah, Karnataka, wherein you had these jihadi teachers openly slapping and punishing Hindu kids who seem to be carrying Bhagavad Gita in their bag or seem to be reading them in their free time. So this is something like an affront to any kind of civil society, to any kind of religious tolerance, to any kind of drama of secularism. You know? And all this liberalism and all this wokeism, folkism, this all rings hollow. So I think this is high time that the Sanatani Hindu community should get together, form various organizations for itself, and take up cudgels and take up, find out ways and means to protect ourselves and our religion and our culture and our kids. Absolutely, sir. So before we continue, I would, before we start with what is the trail case for people who don't know who was missed the Lavanya case, उनका अपने डिटेल उनका जो इन लिस्ट ऑफ इवेंट्स है वो हुआ है उनके साथ वो बोलना चाहता था पहले और उसके पहले एक और मजेदार बात आई शुडंट से मजेदार बात इट इज नॉट मजेदार एनीमोर पेनफुल फैक्ट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन अपने एसएसआर केस और इसका अब बोल सकते हैं कि ये तमिल में एक प्रॉवर्ब है जो सर को और नी को क्या अटैप कर रहे हो मैं एक्चुअली है मैं थोड़ा वो बोलता हूं ताकि अपने लोगों को समझ में आए when they are fighting for justice for SSR this is the similar case वो थोड़ा आपको बोल देता हूं when SSR case was जो हुआ था उनके साथ हादसा हुआ था was because of people around him could not stand his defiance to activities around him like जो बाकी लोग थे उनको अपोज करके वो सिंगल आदमी था जो फाइट कर रहा था the norms which was kept by the Bollywoodians he went against it okay they could not make him abide by what they do लावण्या जी का भी वही केस है तो लावण्या जी को उनके पीयर ग्रुप अदर स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू डू व्हाटएवर आप इफ यू वांट टू ग्रो अप आई विल गिव यू एजुकेशन मैं आपको वो देता हूं ये देता हूं आप कन्वर्ट हो जाओ शी डिड नॉट obey to it instead of all the persistence of all the torture she had on the family को इतना लूर दिया कभी उन्होंने नहीं एक्शन किया वो एक है एसएसआर आपको हमको पता है कि बहुत सारे अट्रोसिटीज बहुत सारे रिजेक्शंस इंसल्ट्स एम्बैरसमेंट्स एंड अटैक्स ऑन हिम बाय हिज फेलो एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री पीपल प्रिंट मीडिया कितने ब्लाइंड आर्टिकल्स लावण्या जी के साथ भी वही हुआ है उनके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स फेलो स्टूडेंट्स एवरीथिंग सुशांत सिंह राजपूत का वो था कि वो इंटेलिजेंट था मैच्योर था सो ही मैनेज टू विथस्टैंड ऑल दिस एंड व्हेन ही थॉट फिल्म्स नहीं है तो छोड़ो यार मैं दूसरे इसमें जाता हूं ही वाज वेरी डाइवर्स इसलिए उनको कुछ नहीं कर पाए दे मर्डर्ड हिम आई वुड रिपीट दे मर्डर्ड हिम यहां पे भी उनको इतना पुश करके दे दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज आल्सो अ मर्डर ऑल्दो द बच्ची ने जो 17-year-old girl when she takes pesticide उनके दिल में कितना वो
disappointment, itna insult, kitna pain she would have undergone. Then SSR was attacked, ostracized because he was an outsider. For them. Same case in case of Lavanya, because she's from a poor background, economic background. Her parents were coolie workers, sir, agricultural coolie workers, and she followed Sanatana Dharma to the strongly. Whereas the rest of the students were again abiding with the Christians or Hindus, सिर्फ नाम के लिए था. SR case में within the first hour or within the first day, the Mumbai police told it's a suicide. यहाँ पे within the first or 2 days they said there's no involvement of conversions. कैसे पता sir without formal investigation? Police was in connivance with bigger people, with the government. है ना? लावण्या कभी वो डीजीपी आके बोल रहे हैं, एसपी आके बोल रहे हैं, there's no involvement. कितनी दिन में? एक दिन में. क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? कुछ नहीं हुआ. SR केस में भी there were a lot of cases filed who stood with SSR, raised the voices against SSR. For example, आपके ऊपर भी, Lavanya के केस में भी, whoever stands and voices for Lavanya, they were threatened. There were cases filed on them, especially on the videographer who took the video, जो अभी proved to be a vital case. So, I can see they tried to malign his image. They tried to character assassinate Sushant Singh Rajput, calling him a druggist, calling him an womanizer, calling him whatever nonsense they could do. लावण्या की केस में वही हो रहा है. मीडिया हाउसेस क्या कर रहे हैं? उनके फैमिली को, उनकी माता जी को वो बोलते हैं फॉस्टर मदर है, उन्होंने उनको जान लिया है, उनको टॉर्चर किया है. शी कुड नॉट. और बच्ची के ऊपर बोल रहे हैं, बच्ची को सिंपल एक्टिविटीज दिया है, क्लीनिंग द स्कूल, और नहीं ले पाई, सो शी कमिटेड सुसाइड. शी वाज नॉट एबल टू कोप अप विद एग्जाम्स, इसलिए सुसाइड किए. व्हाट नॉनसेंस, हाउ मच. यहां तक आया सर, लोकल बीजेपी ने, लोकल डीएमके गवर्नमेंट पॉलिटिकोस ने परसों, बिफोर दिस कोर्ट केस जजमेंट केम, बिफोर दैट they were even telling that the hospital people, BJP, wanted to get a munafa out of it, so they paid the hospital to poison the kid. यहां तक हुआ है उन लोगों का. उनका देखो कितना मानसिकता है. So when we understood the pain, we felt the pain for SSR, how much he had undergone. I would say that is why I am calling Lavanya ji also as a murder. It's not a suicide, it's a murder. हाँ sir. Sorry, I get little. बोलिए sir. No, it's quite normal to get carried away, Arun ji, because all of us are going through the same feelings. All this cover-up games and all this shit, they can't even do the cover-up properly. Yeah. अभी आप किसी को भी बॉडी में, अगर somebody already dead, you cannot inject poison. It will not travel within the body. It will remain localized most of the time. It will not be synthesized. Yeah. So whoever wants to try it and do it, it is of no use. Okay. The postmortem you immediately spot it. That is one part. Secondly, sir, this is not a simple case of suicide or murder or whatever. This is a case of oppression and forced conversion leading to murder, leading to death of the child, which is a much more serious affair. And also the child is, underage child. She is a minor child. So definitely all these people who are responsible. In fact, I have heard certain statements which have been given by the girl, dying declaration or whatever, that these school your warden and the sisters there, they used to get a lot of work done by her. And when she would protest, look, I need time to study, they would make her do all the hostel work, then the accounts work.
So मैं लिस्ट this ऑफ is इवेंट्स बोलता हूँ सर, this is आई देन यू विल अंडरस्टैंड ये हाँ, वो इनका, आप बोलिए, आप हाँ थोड़ा उनका डिटेल ये में बैकग्राउंड बताइए क्या है। कि क्या है। हाँ, उसके पहले सर लेट अस इनवाइट अपनी एडवोकेट सोनिया रैना जी ज्वाइन किए हैं अपने अदर पार्ट ऑफ T3, या सोनिया रैना जी। या जय हिंद, जय जय हिंद, भारत, जय जय भारत, जय श्री राम। हर महादेव, जय all हिंद, of जय you, भारत। and Jai Hindu Rashtra, of course. It goes without saying now. We should use this much often. Yes, we guys were talking about Lavanya. So, as Ujjwal ji was saying, because I just joined, I'm sorry for being late. I was occupied. So, this is a very planned process. और आप देखोगे तो सिर्फ तमिलनाडु नहीं, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में हो रहा है, बट तमिलनाडु में बहुत टाइम से हो रहा है, एंड बहुत टाइम से हो रहा है, लेकिन कभी भी इसको हाईलाइट नहीं किया गया। इस बार भी अगर एक पर्टिकुलर पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती किसी भी कारण से, तो ये भी दब के रह जाता। लावण्या का केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कन्वर्जेंस किस स्केल पे हो रहे हैं और किस लेवल पे इवन किड्स आर टारगेटेड, और उनको किस तरह से ऑप्रेस किया जाता है, किस तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, और किस तरह से लालच ऑफ गेटिंग यू अ जॉब, ऑफ गेटिंग यू बेटर फैसिलिटीज इफ यू कन्वर्ट, और गिविंग यू मोर बेनिफिट्स, जो हम बहुत टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं उसके बारे में। सो हम कहते हैं टूल किट, दिस इज अगेन अ टूल किट। सो वन ऑफ इट बीइंग लावण्या, बट आई एम श्योर अभी आप लोगों से अरुण जी बात करेंगे, तो हमने इसमें ढूंढा है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, और बिकॉज अरुण जी बिलोंग्स फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स अ वेरी क्लोज सब्जेक्ट टू हिज हार्ट, सो ऑल द प्लेटफॉर्म इज योर्स। अरुण जी प्लीज आप बताइए हमको और भी केसेस के बारे में, और लावण्या का केस का बैकग्राउंड, और बेसिकली आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस केस टू अंडरस्टैंड। और बाकी हमारे जो गूगल देवता है और उज्जवल जी, वो बीच में पिच इन करते रहेंगे, और मैं यहाँ पे हुई आप लोगों के साथ। सो थैंक यू, एंड माइक इज योर्स अरुण जी। बहुत धन्यवाद सोनिया जी फॉर for your kind words and support. Especially, I know you have been like you have been pushing me to at least आप दोनों ने एक केस के बारे में बतानी चाहिए. We have to take it up मुद्दा. So thanks very much because I don't know how to put it, but then it is a very unfortunate thing that the British started it and the Congress. And I am going to name everybody, Sonia ji and Ujjwal ji. Don't mind me telling that Congress have been consistently suppressing and trying to divide the Tamil Nadu from rest of the thing, and they have been doing it systematically for a specific reason. उसका एक और reason है this specific thing of conversions. In 1800 से ही शुरू हुआ है, ब्रिटिश ने फॉलो किया है, उसके बाद कांग्रेस को बैटन दे के गए हैं. दे डिडंट गिव फ्रीडम, दे बैटन दे के गए हैं, तुम करो, मैं वहां से एडमिनिस्ट्रेट करता हूं. दैट इज एंटायर थिंग. तमिलनाडु वाज टारगेटेड मेनली बिकॉज तमिलनाडु को वही मैं आई वाज डिस्कसिंग विद पीपल, तमिलनाडु को वही टारगेट कर रहे हैं. वाइट ओनली तमिलनाडु और सम अदर पीपल. आप समझ लीजिए तमिलनाडु एक तो एक ऐसी स्टेट है, साउथ सदर्न टिप ऑफ द इंडिया, कट करके निकालना बहुत इजी है. वो एक बात है. दूसरी बात, सदर्न टिप ऑफ तमिलनाडु की हर एक गांव में, आई हैव सीन दैट, हर एक गांव में, हर एक फैमिली में, बी इट एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन, उनका एक कल्चर है. सनातन इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर. सुबह उठते ही दे हैव टू वेक अप विथ सुप्रभात सॉन्ग. मैं खुद सुना हूं सर, हर एक विलेज में चलता है. और मारियम्मन, अम्मन का सॉन्ग्स चलता है टेम्पल से. सुबह उठते सब लोग बैठ के बाहर वो क्लीन करके, काउडंग से क्लीन करके, देन दे प्लेस दैट फूल लगाते हैं, काउडंग के अंदर फूल लगा के बाहर लगाते हैं. दिस इज irrespective of any religion or any caste or creed, they do it on front of their house. I have seen it in the villages. Sir, this is part of it, has come part of our the culture, life के अंदर ही आ गया था. इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल था. अरे यार, ये तो सनातन तो उसकी जिंदगी में करा है. हाउ टू ब्रेक देम. इसीलिए दे वांटेड टू गेट इनटू दैट बिजनेस, ब्रेक देम. तो क्या करे हैं,
They disguise themselves as localites. ये द्राविड़ा का जो सिद्धांत इन्होंने लेके आए ना, वही द्राविडास आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया. इन्हें लेके आने क्यों है? वन दे सेपरेट. अब वो 4 बुल्स और एक मैं बार बार बोलते रहता हूँ, 4 बुल्स एंड एक लायन का वो स्टोरी बोलते रहता हूँ ना, वो सुने होंगे ना. व्हेन 4 बुल्स गेट टुगेदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द लायन टू फाइट. सेपरेट करो, मारा जाएगा. सो दे वांटेड टू सेपरेट एंड डू. द्राविडस्तान इसलिए तो लेके आए उन लोग, तो सेपरेट करेंगे, उसके बाद कन्वर्शन हो जाएगा. सदर्न टिप तो ऑक्युपेट कर लिए, ब्लॉट पेपर में आप लगाए तो हो गया ना. कन्याकुमारी तो चला गया, 65% नाउ इज कन्वर्टेड. हाँ सर बोलिए, उसके बाद आई नो यू आर रेज्ड योर हैंड, सॉरी. नहीं, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन फैक्ट, लाइक अभी ठीक है, ये इतना ये लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा करेगा, बट द पॉइंट रिमेन्स दैट, दोस्तों ये आपका सबकी इंफॉर्मेशन के लिए है, द्रविड कम्स फ्रॉम ट्राविड, लैंड विच इज बाउंड बाय ocean on 3 sides, Hindu Sagara on 3 sides, Travid, 3. Okay, so I do not know what is this sham of Aryan and Dravidian culture and all this bullshit which they have cooked up. These have been cooked up by the Britishers, yeah, and their anthropologists and all that. Sir, it is not the British, sir. I'm telling you, it started right from before that. ये पोर्चुगीज गोवा से ही शुरू हो गया, डच से ही शुरू हो गया. ये सब सर, दे आर ऑल पार्ट ऑफ वन बिग कन्वर्शन कबाल सिटिंग समवेयर देयर. उनका क्या है, उनके बीच में ही झगड़ा है सर. देयर आर लाइक वी हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स ना, उसके डिफरेंट स्कूल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है. जो लोग ज्यादा सोल हार्वेस्टिंग करते हैं इंडिया को, वही बेचते हैं. जेस्टुइस्ट, मेथोडिस्ट, ये लिथुअन्स, ये सब क्यों आए सर? सब they are all different forms of Christianity which landed in India. और उज्जवल जी इसके बारे में विस्तार से पहले बार कन्वर्शन के, एंटी कन्वर्शन के बारे में सेशन में बोले थे. Whenever traders and merchants came, I am telling about ancient India, जब भी लैंड करते हैं उनके साथ एक क्रिश्चियन मिशनरी आता था. क्रिश्चियन मिशनरी क्यों आता था? ठीक है, उनके लिए प्रे करना उधर जो अलग बात है. नहीं, they were doing trade this here. इन लोग अपनी साइड में बेच देते हैं, चलो जाके कन्वर्ट करो. That is how Saint Thomas came. Arun ji, let's see. Ancient is very correct, so that is the base. But abhi bhi they're doing the same. We have to explain this to people. I was speaking to one of my friends recently. She's in Germany, and suddenly she says that, no, there's this father, he's gone to India. I said, why has he gone to India? And she's like, because conversions are there, so we have to send these people. So they send them in batches. So they are provided all these facilities of living, and their with their families residing in some particular church and doing the conversions. So why can't government see through this? It's not a new thing, as you rightly said. It's from the ancient times. But why are we sleeping? What is the situation of Kerala right now? What is the situation of Tamil Nadu right now? What is happening in Punjab right now? So I just wanted to bring it, like the connection, like it is from past and it is continuing. They're sending them on missions. India is a mission right now for all these missionaries for convergence. And पैसा कितना pump in हो रहा है वो आप लोग सभी देख रहे हैं. Sorry Arun ji, but you carry on. Yeah, so No, one thing. you are absolutely right. Sonia ji, आपकी जय हो. You are absolutely right. Bang on target. No? अरुण जी बताइए, हमको थोड़ा सा हिस्ट्री दीजिए, बैकग्राउंड, ये द्रविड़ा का या जो ईवीआर मूवमेंट और इन लोग का जो ये रोल है ना इसमें, थोड़ा सा जरा बताइए. Before that, let me start with Lavanya's case, sir. That is because Lavanya ji को अगर केस के बारे में अगर किसी को पता नहीं है, तो they will not understand the gravity of the situation. ये बच्ची कितना सहन लिया, उनके पेरेंट्स कितना सहे हैं, ना? So let's start with that. So ये केस हुआ था. First of all, this kid was brilliant. When I say brilliant, let me tell you this. She scored 489 out of 500 in her 10th class. ठीक है?
So इन लोग क्या किए हैं, बिफोर शी अपियर्ड फॉर द 10th एग्जाम शी वाज कंसिस्टेंटली, आई मीन शी जॉइंड द स्कूल व्हेन शी वाज इन द 8th क्लास. Sacred Hearts, I mean, I'm going to name, I'm not going to refer back. Sacred Hearts Higher Secondary School, a government aided Christian missionary school. और वो एरिया जो जहां पे थे उसका नाम क्या था, माइकेल पट्टी. उसके पहले 1990s के पहले उसका नाम था जाफरपेट. मैं नॉट इवन जाफरपेट, सॉरी, आई एम कंफ्यूजिंग विद द नेम. उसका नाम डिफरेंट था. ठीक है, उसको माइकेल पट्टी बना के इन लोग ने क्यों किया, बिकॉज ऑलमोस्ट द एंटायर थिंग वाज कन्वर्टेड. ठीक है, जैसे अपना बहुत सारे हमारे सिटीज का भी नाम इस्लामाइजेशन किया गया था, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ था. बैंगलोर में जरा सो मेनी एरियाज, वेंकी जी भी है, उसको पता है, दे मेड इट एज विल्सन गार्डन और समथिंग, नेम्ड आफ्टर whoever ruled us. तो वैसे ही यहाँ पे भी बनाया गया था माइकेल पट्टी. आई डोंट नो व्हाई माइकेल केम इनटू द पिक्चर. ओके, सो सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल, शी वाज रीडिंग देयर, 8th स्टैंडर्ड में ज्वाइन की थी, बिकॉज इन हर विलेज वेयर शी स्टडिंग 8th क्लास के ऊपर उनका स्कूल नहीं है. टिल 8th क्लास ओनली, स्पेशली फॉर द गर्ल्स. आफ्टर 8th क्लास दे कैन नॉट स्टडी, है ना. एंड उनके पेरेंट्स, आई टेल यू, दे आर लोअर लाइक इकोनॉमिक क्लास. उनके पेरेंट्स, उसके फादर, ही वाज एन एग्रीकल्चरल कूली. Okay, so imagine that is the amount of this thing, and the kid, their entire thing was on the kid, because वो बच्चे जो है, बच्ची, she had such amount of brilliance, she told, I will take care of my parents. मेरी पढ़ाई से मेरे पेरेंट्स को ऊपर लेके आऊंगा. That was her only goal. So 8th class में Sacred Heart School में join किए थे. They saw her 8th class, or she scored top. 9th class she scored top. They recognized that this girl, she's going to top her school as well as the district. Then उन्होंने 10th क्लास एग्जाम के पहले उनको अप्रोच किया, पेरेंट्स को. दोनों अप्रोच करके बोले थे, वी विल टेक केयर ऑफ योर फर्दर एजुकेशन, वी विल टेक केयर ऑफ योर कॉलेज, आपका पूरा हम देख लेंगे, जॉब तक हम देख लेंगे, आप कन्वर्ट हो जाओ. लावण्या से whatever, bring somebody else. Her mother flatly on the face refused it. They had a small verbal duel also. उसके बाद निकल गए. She was put in a hostel because 10th में जाके और पढ़ना है, बल्कि 10th में she scored 489 out of 500. तो she stayed in the hostel. बच्चों को बार बार देखने के लिए नहीं जा सकते माँ बाप, they are not that rich. तो they were staying back. She was not allowed to come. बाकी सब बच्चे आ रहे थे उनके विलेज में जो भी पढ़ रहे थे. They used to come back for the festivals, Hindu festivals. She was not allowed. ये लोग फोन कनेक्शन क्या है, मोबाइल अलाउड नहीं था. एक कॉमन नंबर था, उसको फोन करना था. माता, आई मीन, दिस आर ऑल इंटरव्यूज फ्रॉम द मदर एंड फादर. ठीक है, मदर जब भी फोन करते थे, दे नेवर यूज्ड टू आंसर. और जब भी ये लोग जाके पूछते हैं क्यों अटेंड नहीं कर रहे, बोले तो नो हम बहुत काम में बिजी रहते, नहीं रहे, इसलिए आई एम नॉट एबल टू आंसर. सो दे वर almost not in touch with their daughters, but they were worried. They used to visit once in a while. They used to talk to her. बच्चे, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ माँ, उतना ही बोल रहे थे. शी वॉज नॉट टेलिंग एनीथिंग व्हाट हैज हैपेंड टू हर. उसके बाद 12th क्लास 11th क्लास जब क्लियर 12th क्लास एंटर किए थे, फिर दे अप्रोच्ड हर, देयर पेरेंट्स टेलिंग, कन्वर्ट हो जाओ, हम आपका पूरा भविष्य देख लेंगे. अगेन दे रिफ्यूज्ड. उसके बाद ही ऑल दिस थिंग स्टार्टेड. देखो, इसमें दो विषय आपको याद रखना पड़ेगा. पहले विषय, why they are targeting people who are why Lavanya was targeted, because she was a topper. क्यों टॉपर से उनको क्या मिलेगा? They don't want, अगर न्यूज़पेपर में इसमें आ गया लावण्या scores डिस्ट्रिक्ट टॉपर आने के पहले, imagine that name comes as Margaret or Mary scores district topper. First part, they want to collect the cream. सोसाइटी का क्रीम को कलेक्ट करना है, उसको कॉलेज में, स्कूल में भर्ती करना है, ताकि वहां से जो फ्लाइंग कलर्स में आएंगे उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में घुसाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में फिल करेंगे, ऑल दिस देयर ओन पीपल. और बिकॉज दे वेंट थ्रू देयर ओन डोनेशन, थ्रू देयर थिंग, दे विल बी लाइक टोटली, आई एम इंडेप्टेड टू यू.
अरे मैंने आपको इतना किया, तू मुझे करना पड़ेगा. So once they get into the job, what they'll do, they'll start pulling in their own people. Recommendation. Arunji, हाँ जी. Arunji, because you're explaining this point, हम्म. why don't you also connect it with the missionary colleges and colleges like St. Stephen in Delhi, where we recently read what is happening? There's a reservation of 50% for this Christian community. So, why is the basic law, which we say equality, that is being deceived? So, if you connect that with the school thing and Lavanya thing, I think it will be easy for people to understand what we are talking about. तो आपके जितने ये बड़े 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 फ्रेंच नाम वाले कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं, आप उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए लोगों को. Thank you, Sonia ji. So, this is my personal experience. Probably I will share. My elder brother, I went with my elder brother for his college admission के लिए एक college को गया था, which was a Christian college. Okay, when he entered there, we went to multiple colleges. We gave fill the administration form. Administration form fill करने के पहले एक Christian college में जाके हमने दिए थे. And that person told, oh, you are first he told, okay, you are not a Christian, no, so आपको एक कट ऑफ परसेंटेज इतना होनी चाहिए, नहीं तो इतना पैसा पे करनी चाहिए. He told, no, I mean, I've scored this much. बाकी लोगों को why can't, he was arguing, but उन लोग अग्री नहीं किए because they told, no, it's a minority college, minority को ही मिलेगा. पहली बात. और दूसरी बात जब सोनिया जी बोल रहे हैं ना, do you people know, ये तमिलनाडु में है, बाकी और स्टेट्स में भी है. Do you know, starting a minority college, you don't need to pay the initial, उसका नाम भूल गया मैंने, दो फी का. They have to pay an initial fee, the fund. नहीं पे करना पड़ेगा minority institutes को. Before 1947, only minority colleges were allowed to open all through India. आपको कोई सनातन कॉलेज नहीं मिलेगा. Why? ठीक है, वो हो गया. एंड उसमें भी रिजर्वेशंस है, मोर देन, एज सोनिया जी वाज मेंशनिंग, मोर देन 50% फर्स्ट टू देयर कम्युनिटी, उसके बाद ही रेस्ट ऑफ द पीपल. अरुण जी, अब हमने लास्ट सेशन में इसका बात किया था, एक दो सेशंस पहले, जहाँ पे हमने बोला था कैसे ऑल दीज टेम्पल्स को छोड़ के गुरुद्वारास, मॉस्क्स और इन सब को they have the right to preach their religion. Only Hindus are not supposed to. और हम लोग schools भी नहीं खोल सकते जहाँ पे हम अपना religion preach कर सकते हैं. तो उज्जवल जी, let's do the comparison of if Christianity can be preached and उसको as a religion फैलाया जा सकता है, conversions किया जा सकता है, तो Hindus को एक institute चलाने के लिए, अपना religion preach करने के लिए क्यों नहीं allowed है? So both of you are on the panel, so I would ask you both to explain its points. मैडम, मेरा तो ये कहना है, मेरा मत तो ये है कि इस सरकार को पहले ही कर देना चाहिए था. अब ये 8वां साल है, अभी भी देर नहीं हुई है, अब ये कर दें. एक तो एंटी कन्वर्जन लॉ लाएं, जिससे ओरिजिनल सनातनी हिंदू परिवार कोई भी है, उसको किसी भी तरीके से किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट ना किया जाए. अगर करें तो उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करके उसके सारे बेनिफिट्स विड्रॉ करिए, सारे रिजर्वेशन, सारे बेनिफिट्स विड्रॉ करिए. दैट इज वन. सेकेंडली, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों होना चाहिए? अब आप जो है, आप वो जंगे बद्र का आप जो वॉर क्राई जो है, वो आप आपका मिशन स्टेटमेंट बनाते हो जामिया मिलिया में, ऐसी आलतू फालतू आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो अपने इंस्टीट्यूशन का. तो ये परमिशन होना ही नहीं चाहिए. क्यों होगा? क्या जरूरत है इसकी? क्या उनको एजुकेशन के लिए किसी ने मना किया हुआ है? जरूरत ही नहीं है. दे शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ मिस्टर शर्मा's बुक्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम. प्रॉब्लम क्या है? हमारे गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों के मार देंगे. योगी जी लेकर आए एंटी कन्वर्जन लॉ, उनके खिलाफ के पता नहीं कितने ये लोग कुछ ना कुछ साजिश कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से तो मैडम सीधा सीधा आर्टिकल 25 से लेकर 30-31 तक पूरी तरीके से या तो उड़ा दो, या बिल्कुल उसको टेलर में ऐसा कर दो कि ये
it becomes very difficult for anybody to convert. दूसरा मैडम, आज आज दोस्तों आप सबको मालूम होगा, आज सबसे ज्यादा जमीन कौन से धर्म के इंस्टीट्यूशंस के पास है? सबसे ज्यादा जमीन क्रिश्चियन डायोसिस। क्यों है? लगाओ ना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लगाओ ना, ले लो ना उनकी जमीन। क्यों होनी चाहिए उनके पास? किस लिए? दूसरा, ये वक्फ बोर्ड क्यों होना चाहिए? और उल्टे सीधे वक्फ एक्ट पास करते हैं 91 92 में। आप देखो ना, आज के तारीख में कल को वक्फ बोर्ड का एक लेटर आ जाएगा कि भाई ये जगह हमारी है, हमारे ये मस्जिद है, आपका अगर कृष्ण भगवान का मंदिर है या अयोध्या में भी डाल दिया तो कानूनी से किसी भी मंदिर में अगर इन्होंने दे दिया और कब्जा कर लिया, हाँ, अभी जयपुर में अभी वापस उन्होंने दोबारा कब्जा किया एक मंदिर को, फिर से मजार बनाया, अभी ये कल का खबर है। तो you have no right, police has no right to register an FIR against the Waqf Board and any Muslim institution because the act has been amended like that. वो लॉ ऐसा बना दिया गया है सोनिया जी। तो अब वो कैसे है? दूसरा, ये जो right to profess, follow, propagate, how can it be different for different religions? And then if you have that, how can this be a secular country? ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। एक तो ये सेकुलर निकालना चाहिए, सोशलिस्ट भी निकालना चाहिए। ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, कम्युनिस्ट, ये सब हमारे सनातन संस्कृति से बहुत बाहर के शब्द हैं, बहुत बाहर की प्रणालियां हैं, फेल हो चुकी प्रणालियां हैं। इसकी हमारे भारत को किसकी जरूरत नहीं है। जो फॉलो करते हैं, देखो ना जाके वेस्ट में क्या है, कितनी ज्यादा छीछा लेकर मची हुई है। सबसे ज्यादा मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज डिसअपियर्ड, चर्चेस पूरे डिसअपियर हो रहे हैं, वहां पे ब्रोथल्स खुल रहे हैं, बार्स खुल रहे हैं। वैसे ही वो मुसलमान को काट रहा है। गल्फ के कौन से कंट्री में जाके यहाँ पे रामलाल श्यामलाल जाके काट रहे हैं, बताओ। तो ये सारे जो है फेल्ड आइडियोलॉजीज हैं, हमको इनकी जरूरत नहीं है। सरकार को चाहिए आर्टिकल 25 to 31 के मॉडिफाई करें टोटली। दूसरा, ये प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है उसको पूरी तरीके से निरस्त करिए, पूरी तरीके से निरस्त करिए। ऐसे कैसे आप वो कर सकते हैं? 1947 ये क्या मतलब हुआ? 1947 के पहले जो था वो था, ऐसा कैसे चलेगा? आप मेरे घर में घुस जाओगे, बोलोगे हाँ मैंने अभी लॉ पास हो गया, अभी इसके पहले मैंने तुम्हारा घर ऑक्यूपाई किया, इसलिए तुम्हारा घर मेरा है। ऐसा थोड़ी हो सकता है सर। ओके, तो सोनिया जी, लार्ज स्केल इंजीनियरिंग चाहिए इसमें। So, thank you, Ujjwal ji. So, let me come back to Lavanji's case. Then we can actually discuss about these points. I have kept it as a background also. What needs to be done also. So, let us first finish whatever the sequence of events, right? So, okay, because I don't want to miss anything, which is okay. So उन्होंने पढ़ रहे थे. So 10th class के बाद they approached. She didn't convert. Her parents didn't approach. Then 11th class के बाद again they approached. Then again she told they didn't want to convert. Then उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, you don't want to convert, then we'll see how you score top. तो ये बच्ची को घर स्कूल क्लीन करो, टॉयलेट क्लीन करो, गेट सुबह उठ के स्कूल गेट, हॉस्टल का गेट यही खोलना है, स्कूल का गेट यही खोलना है, रात को आफ्टर एवरीबडी कम्स इन शी हैज टू क्लोज द डोर, किचन क्लीन करो। शी है एंड उज्जवल जी बोल रहे थे ना अकाउंट्स देखो। क्यों अकाउंट्स देखना है? ऑल दिस थिंग व्हेन शी डज, वेयर विल द स्टूडेंट गेट दिस टाइम टू स्टडी? सो उनका डिलिबरेट अटेम्प्ट था, इसको पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करे तो उसको फोकस नहीं करोगे, शी विल नॉट स्कोर टॉप। दैट वाज द आइडिया, दे मेड हर कंप्लीटली डू दैट एंड शी वाज गोइंग ऑन बीइंग, बहुत इसको सताया गया था।
ये बच्ची she could not take it because उनको at the same time she was being totally abused, humiliated every time. सनातन के बारे में, उनकी पेरेंट्स के बारे में. So बच्ची could not take it anymore, nor she could tell her parents. Parents को how what can she tell? Because she knows the parents are helpless. Last में she consumed pesticide. Pesticide को 9th को she drank the pesticide on 9th. Then she fell sick. 10th ko she was like they informed her. I mean, they tried to treat her in her local place, in her house, I mean the hostel. They could not. Then उन्होंने क्या किया? They told her, okay, 10th of January the school informed the parents. ठीक है, she is not keeping well, आप आके हॉस्पिटल को लेके जाओ. उतना ही बोले थे. Then when the parents approached her, she was complaining of vomiting, diarrhea. तो पेरेंट्स ने पूछा था, ठीक है थोड़ा स्टमक बग होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, आपने कुछ खिलाया क्या? एंड दे आल्सो आस्क्ड, मदर आल्सो आस्क्ड, वैक्सीनेशन दिया क्या अभी? देन दे टोल्ड यस वैक्सीनेशन दिया है, मे बी उसी बिकॉज ऑफ दैट. पेरेंट्स को क्या पता है? और बच्ची ने नहीं बोली. देन दे टुक हर टू लोकल हॉस्पिटल, वहां पे वॉमिटिंग का दवाई दिए थे, एंड दे टुक हर होम. उसके बाद भी शी वाज नॉट गेटिंग ऑल राइट. वो फादर को कंप्लेंट किए कि उनके फादर को कि आई एम फीलिंग सिवियर स्टमक एक. 14th को 14 that is Pongal, during the Pongal day, which is considered as a big Hindu festival. तभी उनको बोला गया था. She took her to Aryalur complex, local hospital को लेके गया था. Where they saw that private hospital में देख के बोला गया, भाई ये this doesn't appear to be a normal thing. You take her to Tanjore Medical College, which is the one of the government supreme prime medical college. वहां लेके गया तो 15th को लेके गए थे. Then the doctors kind of पहले देखे थे, उनका आंख देख के जॉन्डिस है क्या? नहीं. ठीक है, तो they tell let us do she doesn't look normal, so let her take a scan. स्कैन निकालने के बाद डॉक्टर्स एक्चुअली कॉल्ड एंड टोल्ड, आपकी बच्ची ने पॉइजन लिया है, पूछो उनसे, बातें करो. When the mother and father then approached her, asked her why, आपने क्यों किया ये? Then she broke down. Then she told, ऐसे ऐसे किए मेरे साथ. बच्ची का दिल देखो, बोल रहे हैं आप स्कूल को मत पूछो अभी इसके बारे में. बच्ची को इतना होप था कि मैं फिर से जाऊंगा स्कूल को, फिर से वहीं पढ़ना है, आप स्कूल को प्लीज मत पूछो. The parents then they went to a local police station, because क्या कर सकते हैं पेरेंट्स को. So they went to the local police station and they तंजौर मेडिकल कॉलेज का जो पुलिस स्टेशन था, वहां पे जाके they lodged a complaint of abetment of suicide. 2 कॉप्स आए थे वहां से, आके पेरेंट्स को बाहर बेच के एक वीडियो कन्फेशन लिए थे, एंड दे लेफ्ट. उसके बाद देन द स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स, पुलिस स्टेशन से गया होगा उनका न्यूज आपके ऊपर, तो द स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स केम एंड टोल्ड, बच्ची ठीक है, उसको चाहे तो बड़ा सा हॉस्पिटल में हम एडमिट करेंगे, उनका खर्चा आपको जो भी है दे देंगे, आपको कितना पैसा चाहिए पूछे. देन मदर टोल्ड, फादर टोल्ड, आप पैसा मैं कितना दे रहे हो, उसका 10 गुना वापस दूंगा, मेरे बच्ची को give us as healthy as she was before. चुपचाप निकल गए उन लोग. They didn't talk a lot. डॉक्टर ने बोला 80% of her lungs is spoiled. Kidneys, liver, everything is damaged. बचना मुश्किल है. फिर भी पेरेंट्स को आशा था कि she will get back. बच्ची को भी she'll go back and get to study. उनको ये बच्ची को इतना वरी था कि 12th क्लास एग्जाम कैसे दूं, है ना, इतना था. देन ये उसके होने के बाद देन अपेरेंटली हर कंडीशन वर्सन, एंड 19th Jan को शी डाइड ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. मरने आई शुडंट से, उनका जीवन छोड़ने के पहले 2 days बिफोर दैट एक उनका कोई रिश्तेदार था तो आया था हॉस्पिटल में. मदर को शी डज नॉट इवन नो हाउ टू टेक वीडियो. मदर बोल रही थी मेनी पीपल कम एंड पुलिस आके बहुत बार वीडियो ले रहे थे, हमको बाहर भेज रहे थे, हमको पता नहीं है, मुझे भी एक वीडियो चाहिए मेरी बच्ची का ऑफ हर स्टेटमेंट. तो उनको रिलेटिव लेके जाके वीडियोस लिए थे, 4 वीडियोस, 2 ऑफ द किड एंड 2 ऑफ द पेरेंट्स. वो 4 वीडियोस लिया था. लेने के बाद
that man actually circulated among his friends and told, can any advocates advise me what can be steps can be taken? This kid is battling for her life. Can we do something? उसमें से कोई बंदा वो एक वीडियो को सोशल मीडिया में रिलीज कर दिया. वो अच्छा हुआ. That is when it became viral. People started to get to know of that. 19 तारीख को जब बच्ची she lost her life, उसके बाद then it became very viral. People started approaching her. Then apparently the Tamil Nadu police, उसका एसपी रावल्ली प्रिया गंदुपुनेनी, वो मैडम जी ने द नेक्स्ट डे इटसेल्फ शी कम्स ऑन द 22nd को वो आके बोल रहे थे कि देयर इज नो एंगल ऑफ कन्वर्शन इन दिस केस and but we are taking we are filing a case against this guy who took a video of this girl. क्यों? ठीक है. Then the father did not trust, or the most hypocritical part of this, the father and the family generations they were voting for their DMK candidates. खुद के वॉलंटियर के खुद के पार्टी वर्कर का बच्ची को संभाल नहीं सकते हो तो क्या स्टेट संभालोगे? And what they did is, once the father did not have trust the police because police को कुछ चल रही नहीं था, then the father, that is when he approached the Madurai High Court. वहां जाके CBCID को टेक ओवर करना है बोल के अप्रोच किए थे, and they refused to take the child's body till then. Then हाई कोर्ट ने बोले थे ठीक है बॉडी को कमीशन के लिए लेके जाओ यार. They ordered the police to do proper investigation, looking into the events and not do anything with the person who took the video. उसको चबाला के तू केस में कॉन्सेंट्रेट करो बोल के. Then they also told individual judicial magistrate ordered for individual judicial magistrate inquiry in Tanjavur to record parent statement in a sealed envelope. Then that is when I think कल का जजमेंट आया था मद्रास हाई कोर्ट, जिसमें जस्टिस जी ने actually told कि they wrapped the police. They said, boss, you are nobody to tell whether it's conversion or not. वो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. आपको पहले जाके you should find out what is actually happened. Investigation करो, उसके बाद आप बोलो. उसके बाद बोलो, ठीक है. So वो पहले बोले थे, and then they also told that you should look at it in all the angles. ठीक है. वो वीडियोग्राफर के पीछे मत भागो भाई, ये केस में पहले करो. एंड हाँ जी बोलिए. Arun ji, see, these are the facts of the case जो share ही नहीं किए गए थे. They were trying to give it different angles, from love angle to other angles, family being named, shamed. What I observed and what I have read, basically, there's certain similarities between Sushant Singh Rajput case and this case as well. अगर आप वो highlight करेंगे तो it will be easy for everyone to understand. And one more thing, before Ujjwal ji और आप continue करें, हमने जितने भी convergence, चाहे पंजाब किया है या जितने भी convergence पे हमने किया है या religious उस पे हमने sessions किए हैं, हमने we have always bring this point कि इसके पीछे एक planned strategy होती है और हमेशा उसको implement किया जाता है या करवाया जाता है. But what is the sad part is कि हम लोग कभी भी इसके अगेंस्ट वॉइस नहीं रेज कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीजंस से, पॉलिटिकल बेनिफिट से, चाहे करंट गवर्नमेंट हो चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट हो, इन सब केसेस को दबा देती है. नाउ व्हेन दिस इज द एरा ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, where people are inquisitive to know what is happening,
तो हमारा उतना ही राइट बनता है कि हम सुशांत के लिए जब आवाज़ उठा रहे हैं या दिशा के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमको लावण्या के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसे कितने और लोग हैं और कितनी और लड़कियां हैं। अरुण जी, इनफैक्ट आई विल रिक्वेस्ट यू, ये फैक्ट्स कंप्लीट करने के बाद आप हमें बताइए हिस्ट्री में इसके अभी बहुत सारे केसेस हैं जो तमिलनाडु में भी हुए हैं, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी हुए हैं, तो उनको भी हम हाईलाइट करें ताकि लोगों को समझे कि इट्स नॉट आउट ऑफ द ब्लू दैट दिस हैपेंड, इट हैज बीन हैपनिंग, बट देयर इज नो पॉलिटिकल विल और डिजायर टू रिजॉल्व दिस। एंड Hinduism, it scares people. Even the parties who claim to be Hindu parties, Hindutva parties, they are scared to take a stand for it. So, if you are Ujjwal, you would like to correct me on some point or add something, please go ahead. सॉरी, हाँ जी उज्जवल जी बोलिए। नहीं दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इसके लिए एक्सक्यूज देते हैं, दे ट्राई टू कवर अप। बहुत से हमारे एसएसआर मूवमेंट में भी लोगों ने बड़ा किया, हाउ कैन अ चाइल्ड डाई, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेथ नाउ, है ना, वी शुड टेक इट अप। अरे बाबा, दिस इज नॉट जस्ट सिंपल डेथ यार, दिस इज ब्लडी प्लान्ड मर्डर ड्यू टू ऑपरेशन एंड रिलीजियस कन्वर्जन। सिंपल। Why are we trying to muddy the waters? This is what is happening. दोस्तों, मुझे तो इसका बहुत ही बड़ा दुख है। अरे यार, आप कम से कम सच तो बोलना सीखो। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो आप एसएसआर के जस्टिस के लिए क्या खड़े हो, या किसी के लिए न्याय क्या मांगोगे? जो चीज आपको दिख रही है, जो केस के जो फैक्ट्स हैं, उसको आप नकार के और फिर उल्टा कुछ दूसरा नैरेटिव बना रहे हो। This is not about simple death or simple suicide and all that. This is a case of planned murder and oppression to force religious conversion by the school authorities. Sir, and the diocese is responsible. And they should be booked. They should be criminally booked and prosecuted. If DGP Tamil Nadu cannot do it, CM Tamil Nadu cannot do it, then I think 2 या 3 इस पर PILs फाइल हुई हैं. I think one of the demands should come to the Supreme Court कि भाई either then it's better than to restrict the government itself. No, tell it to go home. If it cannot administer, if it cannot be secular, claiming to be a secular party and the government, if it cannot practice secularism, it has no right to be there. Yeah, and the DGP and the SP and whatever these station officer, they should be dismissed. Whoever is trying to cover up the case, ये लोग नहीं करेगा, because these are similar things which happened in there are a lot of skeletons in their own cupboard that the diocese covered, whether it is Franco Mulakal case or whether any other case. There are a whole lot of cases which are like that. And I'm sorry to say, Arun ji, very poor performance and very poor response from Tamil Nadu, AP, Karnataka, Kerala. Very, very poor. राजस्थान तो गया हुआ है, we know. Very, very poor. Sir, ये पढ़िए. This is global news. This is not Indian news. Over 50,000 native children were tortured, sexually abused, and some murdered at Canadian church-run Indian residential schools. Not in India. You know? I'm not saying this is only that is why I'm trying to tell people this is not Indian alone. And आपको फ्रैंको मुलकल केस के बारे में आप जो बोल रहे, पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस बारे में सोनिया जी बोले थे ना. So that we discussed about the whatever the connections जो थे ना, मैं वही टॉपिक में जो बोल रहा हूँ कि भाइयों, सुशांत सिंह राजपूत को उसके बिफोर एंड आफ्टर यू सी बहुत सारे मर्डर्स हुए थे. हमको पता चला ना व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन. सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन जी ने हमको आंख खोले हैं. दे हैव ओपन्ड आवर आईज. सिमिलरली इज विथ दिस लावण्या जी.
उसके पहले भी बहुत हुआ है, उसके आगे भी होगा, अभी हो रहा है. We have to stop it through Lavanya. Take Lavanya's case as a focal point. बाकी सब गंदगी को साफ करना है. आप फ्रैंको मुलकल केस के बारे में बोल रहे हैं. कितनी लोगों को पता है 2006 में there was a similar case in Tamil Nadu which is now under the wrap. The person who was similar to Franco Mulakal, who is now a free man. Similarly, this priest is also given a freedom, and that fellow is now a professor in some college also. He had spiked a drink of a nun, raped her, filmed it, and showing the film, repeatedly abused her. 2006 to 2008 तक. 2008 में that nun got pregnant, because of which she was thrown out of the church. उसके बाद she approached her rector बोल के बोलेंगे, एक चर्च में होता है, who is like the in charge. उनको अप्रोच किए थे. That rector fought for her. That rector को इतने बदनाम किए थे, इंसल्ट किए थे. And 2010, when the case was going on, that rector was found murdered. अभी तक वो केस कुछ नहीं हुआ सर. कितने लोगों को पता है? फ्रैंको मुलक्कल केस के बारे में सबको पता है. तमिलनाडु के जो अंदर होता है ना, इट इज लाइक अ बिग डेविल्स सैटानिक प्लेस. जो है वहीं पे होता है, बाहर नहीं आता है. इट्स पीपल वर टेलिंग अबाउट जर्मनी एंड हिटलर ना, व्हाट इज हैपनिंग इन. अब नॉर्थ कोरिया के बारे में सब बोल रहे थे ना, ओ वहां पे न्यूज नहीं आता है. व्हाट इज हैपनिंग इन तमिलनाडु? इट इज नथिंग डिफरेंट. एंड सोनिया जी भी पूछ रहे थे कितने केसेस हुआ है. आई कैन नेम केसेस सर. मैं कैजुअली में स्टार्ट रिसर्चिंग, आई कुड गेट 25 केसेस, हॉरिफाइंग केसेस. एवरीथिंग, नो केस, नोबडी इज जेल सर. इनको क्या करेंगे? इन नपुंसक, ये उनके हड्डी में पलने वाले कुत्ते लोग जो अभी गवर्नमेंट में बैठे हैं, तो दे कॉल देमसेल्व्स एज द्रविडियन स्टॉक्स. बच्ची सुकन्या बोल के एक और बच्ची है, ये दलित के नाम पे बहुत झंडे उठाते ना, एंटी ब्राह्मणिकल दलित. 17-year-old दलित गर्ल. अगेन एक और फतिमा स्कूल, ठीक है ना, 2016 में. शी was found dead inside a well which is close to the school. Public ने उठाया, उनको लेके गया. There was blood, condoms, beer bottles. Sorry if I'm being very open because people have to understand the gravity of the situation. सब पकड़ा गया वो स्कूल में से. During the investigation by a private agency, police से नहीं, police are just नाम के वास्ते, they are just uniformed slaves of the government. बस प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन मीडिया हाउस ने पता किया कि 4 of the pastors were involved in this. They gang raped her and murdered her. केस ट्विस्ट किया गया. That girl had a love affair और अपने आप जान ले ली. One more girl, 15-year-old girl, she went to her house for a Hindu festival called Adivelli. That is for Amman. शक्ति माँ के लिए पूजा है. 3 दिन का पूजा रहेगा. Only for the women folks. ये बोलते हैं ना, women को मर्यादा नहीं देते हैं. यही है, women folks, सिर्फ women schools के लिए separate festival है. 3 दिन के लिए होगा तमिलनाडु में. So she applied for leave. She was studying in a missionary school. She went for 3 days. When she came back, she was abused, humiliated. आप स्कूल क्यों नहीं है? अरे ये फेस्टिवल के लिए गया है, क्या फेस्टिवल है बोल के. She was abused, humiliated so much in front of her peer group. Sir, वो age for 13 to 17, no, the peer group pressure is huge on them. Acceptance, the societal acceptance, the peer group acceptance is huge. So she could not bear it. She hung herself in the school. School ने कैसे ट्विस्ट कर दिया उसको? She hung herself because she scored low in maths. And I mean, I have a huge list. And a worse case I'll tell you. This was caused 2 years back.
2 साल के पहले पकड़ा गया था, वो भी पब्लिक से। एक एम्बुलेंस जा रहा था, ठीक है, एम्बुलेंस के अंदर से सेव मी बोल के आवाज आ रहा था। पीपल्स कॉट इट, ओपन द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के अंदर पूरा वेजिटेबल्स भरा हुआ था, उसके बीच में एक ओल्ड लेडी वाज सिटिंग देयर, 70 प्लस, ठीक है, वन सेमी अनकॉन्शियस मैन 70, एंड देन वन डेड बॉडी था। पब्लिक ने पकड़ के उसको पूछा तो इट वाज रन बाय अ डेस्टिट्यूट एंड ओल्ड एज होम का एक होम था। दैट फादर हैड रन फोर सिमिलर houses all over Tamil Nadu. What they do is they pick up this old homeless elders. I'm going to give you good house बोल के घर को लेके जाते हैं। वहां पे they 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 don't feed them, they starve them, they torture them. उसके बाद जब they leave the world, no, then उनके बाहर पकड़ा गया था 50 सेलर्स, एक स्टोन सेलर्स जहां पे हम स्टोर करते हैं ना, वैसा सेलर्स पकड़ा गया था। they caught it. उसके अंदर वो डेड बॉडी दिया जाएगा, एंड देन वंस द स्किन एंड एवरीथिंग डिकम्पोजेस एवरीथिंग, वो हड्डी जब मिलेगा ना उसको दे वर सेलिंग इट। दिस वाज टोल्ड बाय द पब्लिक हु कॉट देम, एंड they knew this, but कुछ नहीं कर पा रहे because the police were in connivance and the local government was in connivance. इसको क्या बोलेंगे सर? बच्चियों भी सेफ नहीं है, बूढ़े भी सेफ नहीं है। क्या लव स्प्रेड कर रहे हैं ये लोग? आर दे स्प्रेडिंग लव? अभी 65 प्लस ईयर ओल्ड वन मैन और उसकी बीवी, दोनों दे वर रनिंग एन ऑर्फनेज, ठीक है, और उनके 2 वर्कर्स दे वर कॉट। बच्चियों को दे वर ऑर्फनेज को लेके आके जो फॉरेन डिग्निटरीज विजिट करते ना, ओके, ये खुद भी अब्यूज करते हैं, फिल्म करते हैं, एंड दे यूज्ड टू इवन सेल इट फॉर द डिग्निटरीज हु कम। ऑर्फनेज है, एनजीओस, इसे बहुत केसेस सर मैं निकालूंगा तो पूरा ये इट विल गो ऑन फॉर आवर्स। यही इनकी असलियत है, they target all this helpless people और खुद को मसैया बोलाते हैं। बिल्कुल अरुण जी, इनफैक्ट pornography and child pornography is a big business, and most of these missionaries are involved in that, and people connected to the church are involved in it. If you remember, Sonia ji, about you may not remember, about 15 years back, they found a case in Parade in South Bombay, okay, South Mumbai. Okay, there's a very big ring, and there was one 55-year-old gent, Englishman, who used to come and stay in some city hotel, and then he was managing that, he was funding that orphanage. They started it, and वो illegal बस्ती है गीता नगर ऐसा करके, वो शंटी टाउन है वहाँ पे सब परेड में बगल में, एंड उसी में वो ऑर्फनेज उसने खोला। वो एवरीबडी नोज अबाउट इट, सबाना आजमी एंड ऑल दीज पीपल, ये बड़ा उधर आते जाते रहते थे, है ना। once they discovered a very big ring in which a lot of international people were involved, 2-3 other agencies were involved, yeah, and it was a very big racket. And at that point of time, I think 25 or 30 children were there in the orphanage. So abuse of the children, trading of the children, filming and selling of the films online, as well as indulging in other activities. So it's happening, and most of the time you will find that these people are involved. And the problem here is, who is going to bell the cat? The agency which is supposed to take action, they themselves are conniving and they are corrupted. The government which is supposed to be looking after and impartially govern, that itself does not govern.
then what do people do? See, your पता नहीं सोनिया जी can give some kind of a resolution, है ना? अभी सोनिया जी, ये हमारे मीलॉर्ड लोग क्या कर रहे हैं? क्या इनको इस समय जगना नहीं चाहिए? इनको सिर्फ धर्म संसद दिखाई देती है जेल भेजने के लिए और एफआईआर काटने के लिए, ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती. Sonia ji, if you have something, then for that. अरुण जी, उज्जवल जी ने बिल्कुल सही बोला. हमारे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम पता नहीं कब जागता है, कब सोता है. उनका उनका नींद का पैटर्न ही मुझे समझ में नहीं आता है. This was not a matter which was supposed to be taken pro bono by the Supreme Court. There were not a lot of people who should have come forward and talked about it. They will not talk because, as I said, it is convenient for this government and for judiciary not to speak about Hinduism. It scares them. और उज्जवल जी, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज केसेस. हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं. जैसे ये हम किंडरगार्टन स्कूल्स जो होते हैं, बहुत सारे जो आप देखोगे मिशनरीज के द्वारा खोले जाते हैं इंडिया में. और मुंबई में ही 2019 में अ वेरी फेमस स्कूल वेयर द guy who was supposed to be the director of the school was involved in such incidents where he used to inappropriately get close to kids. And when the issue was raised and later he was sent back to the country, but the trial didn't happen in our country because the parents were pressurized by the school and by all these people and offered money, and it was put under the carpet. But after 1 year or so, the family again came out and spoke about it. But what about the law and order? It was already for a toss because he has already left the country. He's no more on the board of directors of the school. The school don't have owners now. So we forget that when we are sending our children to schools and all that, we have a moral responsibility also to check about the the people who are there. We don't do that. और लावण्य का केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है अरुण जी, क्योंकि क्या हो जाता है ना, हमारे यहाँ जो ये डिवीजन क्रिएट किया गया है साउथ नॉर्थ, यू नो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू गो ऑन स्पेसेस. उज्जवल जी भी गए होंगे बेसिकली. आप तमिल में बात करें, हम लोगों को कैसे समझ आएगा? हाउ विल वी अंडरस्टैंड और कनेक्ट विद यू? बिकॉज ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है ना, लैंग्वेज. बट जब आप ऐसी बातें करते हैं, देश की बेटियों के बारे में बातें करते हैं, या देश का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, या ऐसे कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं, तो मेरे उन लोगों से भी अनुरोध है कि आप इसको एक स्टेट का मुद्दा ना बनाइए, आप इसको नेशनल मुद्दा बनाइए. क्योंकि कोई भी और प्रजाति या जाति होती है, वो हर चीज़ नेशनल मुद्दा बन जाता है. पर जब हम लोग हैं, वो उसी डिवीजन और उसी में रह जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर में. बात कीजिए आप लावण्य के बारे में. हमको भी समझना है हुआ क्या है, हमको भी वी विल अवेयर आवर गर्ल्स दैट व्हाट कैन हैपन. But who will? Because you guys are there who know the facts better than us. The only facts we know are through media, and they have also been twisted and turned. तो मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से. और ये बीजेपी वाली जो सो के जागते हैं और जाके सोते हैं, it cannot be your convenience. When we throw you out of the power, it will be our convenience. So आप सो जाते हैं, फिर आप जाग जाते हैं. आपके इतने लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी पैनल के, आप लोग क्यों नहीं पीआईएल फाइल करते हैं? 3 पीआईएल फाइल हुई है मुश्किल से, वो भी एक अश्विनी उपाध्याय जी ने की है. और बाकी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उस समय एक हिंदू लड़की का मुद्दा नहीं आता है. एंड ऑल दीज मीडिया, सॉरी, sold out bots, they don't talk about it. उज्जवल जी, अरुण जी, कितने लोगों ने इस मुद्दे को समझा होगा? मुझे तो पहले 3 दिन कंफ्यूजन था चल क्या रहा है, क्योंकि हर चैनल पे एक डिफरेंट प्रोपेगेंडा के हिसाब से इसको दिखाया जा रहा था. So Sonia ji, Ujjwal ji, मैडम आप before you. बिल्कुल एक सॉरी मिनट, sir. Sorry, सॉरी. sir. एक मिनट. So Sonia ji told the right thing. I went to many spaces. I told them, requested them. वहां पे स्पेसेस में जो लावण्य जी के बारे, आई टोल्ड देम, बॉस अब तमिल में सिर्फ बातें मत करो, हिंदी में एटलीस्ट, इफ नॉट इन हिंदी, इंग्लिश में बातें करो.
because we have to. There is a time to connect nationally and globally. ये बात को बाहर आनी चाहिए. People have to tell. उन लोगों का sadly few of the spaces which I went, they were concentrating on local DMK government. मैं बोला अरे ये पार्टी का लाइन छोड़ो. It is gone beyond the party line. कुछ लोगों ने समझा. They told we'll keep it specifically only for people who are non-Tamil speaking people. Because उन लोगों का भी इच्छा है कि बाहर लेके आना. वो भाई अलग एक बात है. और दूसरी बात जब आप बोले थे ना ये बहुत सारे चैनल्स जो नेशनल चैनल्स हैं, नॉट तमिल मीडिया तो बहुत खराब है. दे आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट ऑल टुगेदर, यू नो. तो नेशनल चैनल्स है जो वेरी वेरी लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो आई एम सीइंग, दे आर टेकिंग सेक्युलर लाइन. ओ ये कन्वर्शन नहीं है, बच्चे को सुसाइड के बारे में बातें करो, ये कन्वर्शन. भाई जो है उसके बारे में बोलो. If even my brother did something wrong, name him. But लेकिन ये just to pacify something, then you are also vying for the viewers, not for the truth. तो आप justice का warriors नहीं है, आप किसी और के बुक के हो. हाँ उज्जवल जी, सॉरी. अरुण जी, मुझे तो सोनिया जी, अरुण जी, मुझे तो शॉक लगा है बोल के जब सुन के. कुछ लोग ऐसे बोलते कि भाई नो नो नो, दिस हैज बीन एक बच्ची की जान चली गई है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये रिलीजन का इशू नहीं है. अरे हु इज सेइंग दिस? अपने अंदर झांक के तो देखो. आर यू स्लीपिंग विथ योर आईज ओपन, और यू आर विलिंगली ट्राइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ नैरेटिव? दुख होता है ऐसा सुनकर. ऐसे लोग फिर क्या, हम क्या ऐसा बात करके, if you are going to be dishonest with yourselves and with others, and you are going to expect न्याय and ask for justice for Sushant or Vijay Chitra or anybody else, कैसे मिलेगा जस्टिस? आप लोग अपना अपना कन्वीनियंस देके सेलेक्टिव एमनीशिया हो जाता है, ब्लिंकर्स पहन लेते हैं. और दूसरा क्या है सोनिया जी, वेरी फनी अनकैनी कैरेक्टरिस्टिक. अरुण जी, ये भी आप जरा सोचना इसके ऊपर. दोस्तों, मैं बता रहा हूँ जो अभी बताने जा रहा हूँ. ऑल ओवर द कंट्री बहुत से लोग प्राइवेट स्कूल्स खोले हैं, है ना. दोज हु आर सेक्युलर सरकारी हिंदूज also, many of them. So they are so much interested in earning money. You know what is the name they are keeping? Saint Paul, Saint Michael, Saint Peter, Saint Xavier. ऐसा करके स्कूल का नाम रख रहे हैं. जबकि there is not a single, it is not a Christian minority institution. There is not a single Christian missionary there. There is no connect or relationship with any diocese. लेकिन जबरदस्ती इम्प्रेस करने के लिए लोगों की, हाँ भाई आपका बच्चा कॉन्वेंट में जा रहा है. आई डोंट नो दिस काइंड ऑफ सर उसका रीजन बोलता हूँ. एक मिनट सर, एक मिनट आप जरूर बोलना. एक तो ये है, आप देख लो दोस्तों, आपको बहुत सारे इंडिया में 70% जगह लोगों में प्राइवेट स्कूल्स में ये मिलेगा आपको. अब देखना जरा ध्यान से. दूसरा, ये जितने हाईवे पे जगह हैं, जितने ढाबे हैं, है ना. अब ये दूसरा एक बहुत बड़ी सच्चाई है अरुण जी, सोनिया जी और सभी दोस्तों की, है ना. इनफैक्ट धनंजय जी ने थोड़ा सा रिसर्च करके मेरे को बताया. बाद में मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया. ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ योर कॉर्नर टच और मेन प्लॉट्स ऑन द मेन हाईवे फॉर ढाबाज एंड रेस्टोरेंट्स, दे गॉट शर्मा का ढाबा एंड फलाना ढिमका. They're all owned by Momins. They're all owned by the peaceful community. And they're keeping Hindu names. तो एक तरफ ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूलों में हम वो देख रहे हैं. Now these are two very important characteristics, which we all have to understand. This goes back to the principle of al-taqiyya. That means आप झूठ बोलो. जंगे बद्र में भी झूठ बोला गया था ना, धोखे से मारा गया था लोगों. ऐसे ही सर. One important thing which you told about the Abrahamic religion, no? I mean, again,
I'm sorry if people feel bad about it, but that is the truth. ये क्यों कर रहे हैं उनका एक कबाल है. As per their holy books, judgment day will come. This is what has been preached by them, preached to them. I don't know whether it is the truth. Judgment day will come only, and the God will deliver them to heaven only when all non-believers change into believers. And it is the duty of every believer to ensure non-believer is changed to a believer. Sir, this is jihad. This is jihad. Why people are interested in coming in? People are saying, "अरे, आपको interest नहीं है तो change मत करो." Why should they feel so much of take effort in changing you? Bhai, this is the reason. It is written in their books. आपको चाहिए तो मैं quote कर दे दूंगा, but I don't want to make it controversial. मैं quote भी दे दूंगा. I don't speak without facts. Sir, ना, don't come in and Tamil preach. Nadu itself, they have diverted temple coffers crores and crores of rupees to buy them rations for or special gifts for Ramadan and this and that. So rice bag Christians are plenty, and so are rice bag jihadis. We know all that, na? So whatever you can do, you cannot cover this up. सोनिया जी आप बोलिए, उसके बाद मैं एक पिक्चर दिखाता हूं जो इनका which shows will tell them. आप उसको देखते ही इमीडिएटली क्या आपके दिमाग में क्या आएगा, आप बोलिए सोनिया जी और उज्जवल जी, है ना. ये पिक्चर गौर से देखिए. वो बोलते ना एक चैनल पे, गौर से देखिए इंसान को, ये देखिए, बोलिए कि आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है. He is wearing a pagdi, right? Saffron cloths, अंदर जनेऊ भी पहना है, देखिए. लेकिन वो एंड में क्या है, एक क्रॉस है. You know what's his name? He's a German priest. Can you believe? He landed in Tamil Nadu. Okay? He infiltrated into our society, learned Tamil and Sanskrit. He was the first person to bring printing press. तो बाइबल का फर्स्ट प्रिंट यही ने देके दिया. He learned Tamil scriptures का जो भी सनातनी स्क्रिप्चर्स को उसको ट्रांसलेट किया था. मिस ट्रांसलेशन, नॉट एक्चुअल ट्रांसलेशन. मिस ट्रांसलेट करके एक मुनि बन गया सर. इसके नाम के ही वाज जर्मन ब्राह्मण, है ना. जर्मन ब्राह्मण है, इटालियन अयर है. इसे तमिलनाडु हिस्ट्री में ये सब होगा. आप बोल रहे थे ना कैसे चेंज हुआ. They infiltrate, they changed, they started translating Indian Tamil scriptures को, they started translating it to the English. कर करके एक कार्डवेल बोल के एक बड़े रेसिस्ट पिग था, उसको ये द्राविडियन पार्टीज उसको ऊपर लगा के घूम रहे हैं. That fellow told Tiruvalvar, you know, that is pretty 5,000 years back. Saint has written it. उसको इन लोग बोल दिया Tiruvalvar met Saint Thoma on the beach. They discussed, he preached Bible, वो लेके इन लोग तिरुकुरल लिख दिए. And they strongly believe in it, sir. आपसे डिबेट कर देंगे बैठ के. वो बिलीव नहीं करते सर, उनको भी मालूम है. नहीं, उनको भी मालूम है. इट इज अ फॉल्स नैरेटिव व्हिच दे आर स्प्रेडिंग, बट दे विल टॉक लाइक दैट. यू गो टू एनी डीएम के, आई मीन सर, ऊपर वालों को छोड़ो, ऊपर वालों को सिर्फ पैसे का बचा है. नॉर्मल पब्लिक सर, दे स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. ये द्राविडियन, आर्यन द्राविडियन कल्चर का जो पिक्चर किया है ना, दिस आर द पीपल हु रोट इट. ओके, रुकिए, उसको फॉरवर्ड करके इन लोग लेके आके दे प्रोपेगेटेड सो मच. अभी आर्यंस, मुरुगन इज ए तमिल गॉड, ठीक है, गणेशा इज ए हिंदी गॉड. इसका मतलब क्या है सर, मुझे समझ में नहीं आया. शिवा इज नॉट आवर गॉड, ठीक है. पहले कृष्णा वाज नॉट आवर गॉड, कृष्णा इज अ ब्राह्मणिकल गॉड. उसके बाद उसको पता चला वो यादव था. ओ यादव मतलब हमारे कुल का, वो भी ही इज अ डार्क स्किन. नो, नो, कृष्णा इज आल्सो आवर गॉड. अरे अरुण जी,
Yadukul, Yadukul और चंद्रवंशी वर आल्सो क्षत्रिय गया. सर इन लोग वरना कुछ नहीं करेंगे, उन लोग उससे वही बेवकूफ नहीं है. Varna नॉर्थ is इंडियन का by साउथ इंडियन का. Varna is by the aptitude and profession. You know, ये इन लोगों को कुछ पता नहीं है. लेकिन चक्कर क्या है सर? Why people are genuinely thinking it is true, majority, because majority of people have stopped going to the temples. Okay, then they hardly celebrate the religious angle of the festival. They hardly have pujas at home. They don't even know the scriptures. They have never studied Sanskrit. So they are totally at unease. They are very uncomfortable with Sanskrit. And if with Sanskrit, then with other languages also, like Hindi also. Yeah. So Sir, with that, you are so far isolated. Okay, then they are abusing the Brahmins. Yeah, they are working on persecution. They persecute the Brahmins and other high castes. अब इसमें हो क्या रहा है? There is no education. There is no sanskara. There is no connection with the civilization. So what are they? They are just zombies. उनको जो उनका आदमी सिखाएगा, हाँ ये सही. सर मैक्स मुलर आपको अंदर पता है ना? का मैक्स मुलर पता है ना आपको? हाँ. सोनिया जी आपको भी पता है ना मैक्स मुलर? That was the idiot who wrote this. And sir, ये सब ब्रिटिश नहीं है दोस्तों, सब समझने जर्मन है. चाहिए. सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, जर्मन, इटालियंस, ये फ्रेंच, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है. डोंट फील दैट ओनली ब्रिटिश है बैड. ऑल पीपल आर सेम. मैक्स मुलर ही स्टार्ट किया था आर्यन द्रविडियन थियरी को, उसको फर्दर किया था ये कार्डवेल एंड हिज वाइफ. इंपॉर्टेंट पार्ट, एज अ फैमिली दे डिड इट. ठीक है ना? मैं बोलता हूँ इटालियन अय्यर, जर्मन अय्यर, इटालियन मुनि, ठीक है, वो अपने आप को वीर मामुनि बोल दिया. ठीक है, ये कार्डवेल, ये सब जीयू पोप. अरे सर कोई भी द्रविडियन से बोलो जीयू पोप बोलेंगे. ओ दैट इज द गाय who came and told, oh Tirukkural and St. Thomas meet and St. Thomas influenced Tirukkural. मैं बोलता हूँ अरे यार, and they made saffron तिरुकुरल को, तिरुवल्लुवर को उसको व्हाइट बना पहना दिए. अभी एक बचा है उस तिरुवल्लुवर के इसमें क्रॉस पहनाना, वही बचा है ना. So you are telling, no, I heard one word which somebody somewhere somebody was telling it, inculturation. That's what they did. These are all called as inculturation. Culture के अंदर घुस के उसको change करना है. And somebody else, I heard one person talk, he told how he's a Christian by itself, by the way. RSS Christian है. ये खुद बोलता है वो. That person says, confuse, convert, and con. CON याद रखिए, common word. Confuse करेंगे, convert करेंगे, then आपको con करेंगे. That is how they perform. लावण्य के साथ कंफ्यूज करने की कोशिश किए, she stood up. कन्वर्ट करने की कोशिश किए, stood up. They could not go to the next step, so they killed her. और quickly सोनिया जी एंड जल्दी सोनिया जी केसेस के बारे में बोल रहे हैं. I'll quickly read through. I don't want to spend more time on this. Then उसके बाद I've shared the link also. People wanted to join, they can join. मैं पढ़ लेता हूँ पूरा. I don't want, because it's a huge thing. तो ये one of the very important case जो था कन्याकुमारी में 19, I mean I'm just mentioning passing moment mention, okay, 1997 से 1982 में मंडई काडू राइट्स बोल के हैं. बहुत लोगों को पता नहीं है वहां क्या हुआ था. That is the way they operate. They first abuse your, they make you feel ashamed and embarrassed of your own religion, culture. उज्जवल जी बोलते हैं ना, हम सीखते नहीं है. सीखेंगे तो भी हम खुद के ऊपर डाउट करना कोशिश करेंगे बार बार. मंडई काडू में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में एक चर्च था, एक टेंपल था, अम्मन टेंपल था. चर्च में से हर बार स्पीकर में अनाउंस करेंगे और प्रेयर्स के साथ दे विल डीमीन, दे विल इंसल्ट, दे विल अबाउट आवर प्रैक्टिसेस. बार बार बोल के क्या हुआ गया, ये दिस हिंदूस टेंपल से भी कुछ नहीं किए. दे आल्सो स्टार्टेड रिटेलिएटिंग. ये उसके बीच में तनाव चल रहा था. एक बार क्या हो गया, फिशरमैन विलेज था वहां पे. दिस फिशरमैन, उनका एक कस्टम था अमन टेंपल के पहले, दे हैव टू गो टू द
sea, beach, sea था ना, sea में जाके डुबकी लगा के with the wet cloths they had to walk to the temple and offer their prayers. OS situation. 3,000 fishermen from Christian community, they surrounded and stood. When the women started to go inside the sea and they डुबकी लगा के बाहर आया तो they threw fishing net on them, they molested, abused. जो भी उनको अपोज किए थे हिंदूज उनको they hit them, they ransacked. Police गए थे, they tried to control, they could not, so they fired. Last minute they had to fire. 6 फिशरमैन मर गए तो इट बिकेम अ कम्युनल राइट. बहुत तनाव आया था. उसके बाद ही एमजी रामचंद्रन who was the chief minister, he came up, he wanted to ask for a anti conversion law. He appointed one man commission who was a big follower of that Evera, who calls himself Periyar. So but then he himself told, a rationalist वो खुदा के बोल रहा है कि वहां पे कन्वर्शन का बहुत टॉर्चर है, आप एंटी कन्वर्शन लॉ लेके आओ. लेके आए बट टेबल नहीं हुआ. Then Jayalalitha came. She tried to bring in. They ensured, the Christian missionaries ensured that she lost the elections. उसके बाद she had to withdraw the case. उसके बाद भी बहुत cases है. लेकिन about the schools only, I'll read about few things quickly. Okay, 2006, Salem. Body of a 17-year-old Dalit girl was recovered from Omalur Fatima School, जिसके बारे में बोला था. She was gang raped. Few priests and evangelical students were accused, but the case filed, but they were later released, cases withdrawn and closed as suicide. ठीक है? Next, 2007, a teenage girl from Kadalur, St. Anne's Girls Higher Secondary School, committed suicide. Family of the girl suspected foul play because the girl's mouth के अंदर cloth stuff था and bunch of hair was found a little away. वो खुद के मुंह पे रुई सूख के कौन सुसाइड करेंगे सर? ठीक है? That case was also went away. 2008, वही राजरत्नम राजरत्नम सेंट जोसेफ कॉलेज का एक प्रोफेसर है, फ्रैंको मोलकल, which I told, फ्रैंको मोलकल of Tamil Nadu. Okay, then 2009, 12-year-old Ranjita committed suicide because she could not read Bible verse properly. And she was wearing a Hindu talisman in her hand. उसको मार मार के इतना उसको ये दिया गया कि she made her suffer that she had to commit suicide. Psychological torture. They tried to cover it as low marks, but then her co-students called it out. 2 more students in the same year, 2009, in Ambattur Emmanuel Methodist College were insulted, humiliated, 9th class students for wearing traditional Hindu wear. And they were called as Silk Smita, if you know who is Silk Smita. Okay. Then 2010, government school in AP Kadapa district, people are asked to read Bible instead of their subjects. Teacher told, when God told, only Bible can take them to Jesus, not subjects. Then 2011, Christian Shelter Homes and Orphanage by Eternal World Trust in Tirumannavayal, rampant sexual abuse and conversions of more than 44 children over years. Owner Jacob, Vimala Jacob, Babu Samuel, Muttu Bhaskar were arrested. Na? In 2016, 37 students studying 5th standard in a minority educational institute in Melur, popular matriculation school, faced the wrath of principal for scoring low marks in Bible in the half-yearly exam. 5वीं क्लास बच्चों को कैपिटल मतलब इतना पनिशमेंट दिए हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट. आउट ऑफ दैट 6 people were admitted in the hospital. प्रिंसिपल ने किया है, you know. Then I told about that ambulance wala, you know. Then sorry, 2018, 63-year-old Reverend Guna Jyotimani, okay, hostel warden of Methodist school in Norayur, sexually abusing a girl studying in 9th class. He was let out as on bail because there is no serious allegations. Na? February 2019, Madras Christian College assistant professor Samuel
Tennyson sexually harassing at least 34 girl students. These are all I'm just running through very fast. There is a lot of other cases, but again, same year in government-aided Christian school, CSI under school Kanjipuram, 2 students were in Tirunir, Sacred Ash and Rudraksha. The teacher Joyson beat them mercilessly, and he told only immoral and gundas and rowdies were them. And he called other students to come and knock their heads. Peer group से सर दो बच्चे को अगर आके सबको मार रहे हैं, सबको बोलने के लिए मार रहे हैं, कल मेरे बच्चा पहन के जाएगा क्या? This is what they call it as they infringe on your cultural elements. और फाइनली एक बात बोलता हूं, उसके बाद आई विल अदर पीपल कैन जॉइन. ये मैं पिक्चर दिखाता हूं. ये पिक्चर भी देख के आपको क्या लगता है आप जस्ट बोलिए. सोनिया जी हैं तो सोनिया जी को पहले बताएंगे कि आपको ये देख के ये छोड़िए. आई अपोलोजाइज फॉर पीपल. ये बताइए. सर, लॉयला कॉलेज की आर्ट एग्जीबिशन है. दिस इज सपोज टू बी भारत माता. लॉयला कॉलेज इन चेन्नई आर्ट एग्जीबिशन है. And same year, one more college in Trichy, they had a seminar where people were called to give a sermon or write an essay. Quickly पढ़ लेता हूँ सर, ठीक है, on women's atrocities in Sanatanam, Hinduism. अब बताइए सर, तमिलनाडु में ये सब हो रहा है. These are all only 5% of entire incidents. मैं बहुत है रखा हूँ मैं, लेकिन you don't have time. Sir, 6 months back, I read about a case wherein in some suburb of Chennai only, I think, Chennai or Trichy, they had built a Bharat Mata idol. They had installed in that shop in the locality. And they were used to offer garlands, flowers, and worship them. Then the other these white hat people, the so-called brown white men or black white men, they started coming and started shouting, and then they strong-armed and they kicked them Hindus out, saying that no, we do not allow idol worship. Get away from this place. And they damaged even the idol. We will not allow you to worship this and that. So now there was a lot of hue and cry was raised. And police case was made. But police, as usual, Tamil Nadu police probably would be the most corrupt police, I think. No? I think it will be. Sir, maybe after I would West Bengal, Tamil Nadu police will probably. Sir, मैं एक बात बोलता हूँ sir. This one part probably. सॉरी, मेरा ये नेटवर्क जा रहा है, तो एक बात बोलता हूं सर. सपोजिटली मिनिस्टर, इन दिस केस एसपी आके लावण्या जी के केस में शी टोल्ड ऐसा ही है, तो लोअर ऑफिसर्स क्या कर सकते सर? आप बताइए. कॉन्स्टेबल्स क्या कर सकते? नहीं, वो सब भी अपना अपना एंगल ढूंढ लेते ना. प्रॉब्लम ये है अभी, लाइक इफ इन सम लोकेलिटी इफ 15 और 20 वो क्रिश्चियन लोग जो है, वो पादरी लोग जो है, वो दादागिरी करेगा, धमकी देगा वहां के दूसरे लोगों को, 20-25 लोगों को. इट इज अ वेरी स्मॉल केस, सिंपल केस. इट नीड नॉट कम टू द नोटिस ऑल्सो. इट डज नॉट नीड टू कम इन सोशल मीडिया ऑल्सो. वो पुलिस स्टेशन में गया, रिपोर्ट लिखाया, वो आके उधर सॉर्ट आउट करना चाहिए. भाई, स्टॉप योर बुलशिटिंग, डू व्हाटएवर यू वांट टू इन योर हाउस. ये तो होएगा. सिंपल केस है सर, सिंपल केस है. इसीलिए मैं बोल रहा था
सभी इंस्टीट्यूट्स में इंक्लूडिंग द लीगल कॉर्पोरेट और इवन द लॉ ऑर्डर में जब ऊपर इन लोग बैठ जाएंगे, इमेजिन ए लेवल बी लेवल ऑफिसर्स और ऑल दोस और पीपल, ठीक है, इसको कुछ मत करो, बाकी लोग क्या करेंगे सर? दैट इज व्हाई दे वांट टू ऑक्युपाई ऑल द हाई पोस्ट सर. So this is the सिस्टम time को when बदलना lot. all the people, then the people at the bottom should revolt. Na, they should follow the law. Okay, we will not obey your orders. What will you do? Can you fire 20 lakh people, 30 lakh people? Can you prosecute bloody 50 lakh people? No, na. If they are genuine Sanatani, they should rise up. सर उनका रोजी रोटी उसी वही से ना, चलता है, उसको पैसा छीन कमाने लिया का है. ओ, तो- हाँ, तो पैसा कमाने का है. अपने माँ बाप को बेच दो, बीवी बच्चे को बेच दो, चलेगा. तो फिर you cannot have both, na. You can't be a moralistic person, a fair person, Sanatani Hindu, and Dharmic person, and do all this. See, सोनिया जी बोलिए, सॉरी, yeah, we let's are hear going it. on a rant. Let's I know, hear I it. know. Absolutely, sir, yeah. And I शिवानी जी भी know. जानते हैं. No, जय but भारत, this, जय श्री राम. ये 6 महीने पहले ये केस हुआ था, चेन्नई का था शायद. Okay, I remember sending a lot of tweets on this. Sonia ji, if you have anything, Arun then ji, Shivani sorry, ji. I lost the connection. I was traveling, so I lost the connection. मैंने सुना ही नहीं. आप लोग बात कीजिए, मैं सुन रही हूँ. जैसे ही मुझे कुछ ठीक है. पॉइंट आएगा तो I'll. ठीक है. नो एक्चुअली उज्जवल जी और मी वर डिस्कसिंग थोड़ा डिस्कशन, दैट इज हाउ द डिस्कशन इज ना. डिसएग्रीमेंट ऐसा था कि उज्जवल जी बोल रहे हैं तमिलनाडु पुलिस एंटायर थिंग इज करप्ट. मैं बोला आफ्टर वेस्ट बंगाल, मैंने बोला जब ऊपर लोग ऐसे करप्ट है तो नीचे लोग कुछ नहीं कर सकते. इवन इफ दे वांट टू डू दे कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज जो मैनिंग कर रहे हैं, जो डीएसपी जाके यही है बोले, तो उन लोग नीचे वाले क्या कर सकते हैं? यू नो, दैट इज व्हाट आई फील. तमिलनाडु पुलिस में मैं जानता हूँ, दे आर कंसिडर्ड एज हार्वर्ड. पुलिस शुड बी रिफॉर्म. पुलिस रिफॉर्मेशन का काम कर दो. ऊपर हो या नीचे हो, सब करप्ट है ऊपर से नीचे तक. प्रॉब्लम ये है, किसी ने काम नहीं करना है. सब काम चोर, पैसा बनाने के लिए और पब्लिक को परेशान करने के लिए पुलिस फोर्स खोल के बैठे. ठीक है. थैंक यू सोनिया जी. शिवानी जी, नमस्ते. जय भारत, जय श्री राम. हाँ, बोलिए. थैंक यू. जय भारत सबको. नमस्ते उज्जवल जी, नमस्ते अरुण जी, नमस्ते सोनिया जी. और आपने सही कहा सोनिया जी, पुलिस वैसा ही है. इनफैक्ट विच एवर ग्रुप ऑफ पीपल आर गिवन वेपन्स, दे विल डोमिनेट. अब वो पुलिस की वर्दी में हो या गुंडों की वर्दी में हो. एंड हमारा डी वेपनाइजेशन करना इटसेल्फ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि हम पावरलेस फील करें. whoever owns weapon owns everything. आज के दिन का वही है. Anyways, but generally point में actually one of the thought came while आप लोगों का discussion चल रहा था, तब एक ख्याल मुझे भी आया कि offices, corporate offices में I used to मतलब हर साल जो NGO सपोर्ट या एग्जीबिशन ऑफर होता है, ऑफिस में बुलाया जाता है, वो सबके सब क्रिश्चियन मिशनरी और वो सब होते हैं. एंड वी गो बाय हर्ड फीलिंग कि अरे सब लोग डोनेट कर रहे हैं, चलो हम भी 200-500 कुछ तो खरीदेंगे. इस चक्कर में बैठे बिठाए उनके थाउजेंड्स ऑफ इनकम लोगों से, इनकम नहीं, डोनेशन हो जाती है एक दिन में. एंड इफ दे आर हैविंग अ 3 डे और 5 डे ड्राइव, जिसमें एक दिन एग्जीबिशन में कुछ सेल भी कर देंगे, तो हम बेकार में कोई कैंडल या कोई कार्ड या कुछ तो ले भी लेंगे. उस चक्कर में सेल पर मनी कलेक्शन अलग है, विलिंगली अनविलिंगली व्हाटएवर डोनेशन अलग है. सो आई यूज्ड टू थिंक, मतलब मुझे एक्चुअली ये सब आइडिया नहीं था, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि व्हाई नॉट एनी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और एनी हिंदू एनजीओज आर इन अ टाई अप. Then I tried to look at the backgrounds of those corporate policies and those people. और वहां पे वही लोग बैठे हैं तो वो अपने अपने ही बुलाएंगे. It was that easy. Exactly. And it was shocking. And from that day onwards, at least I understood कि मुझे blindly, जैसे any blood donation camp comes up in a known area, we go and we donate the blood. Same way, if any donation drive comes in office, we go and do it. We don't think much. लेकिन तब से मैंने अपना स्पीड ब्रेकर लगाना शुरू किया कि नहीं, ये कुछ अलग ट्रैक है. मैं मेरा मर्जी से मुझे जहां देना है वहां दूंगी. मुझे पर्सनली जो पता है, अभी ऐसा भी नहीं कि सब लोग ही दूध के धुले हैं हिंदू.
हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ या वो भी है, वो उसमें भी करप्ट भरे हैं. सो वट एवर आई फील पर्सनली, या किसी ने मुझे पर्सनली रेफर किए हैं कि हाँ ये ट्रस्टेड सोर्सेस है, आई देन स्टार्टेड चूजिंग कि अच्छा हमें इन्हें सिलेक्ट करना है एंड वी शुड बी कॉन्शियस. ऐसे नहीं सब लोग दे रहे तो हम भी चले गए उनके पीछे. सो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज पॉइंट. किसी ने बोला नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, बट जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन इट वाज नॉट सो ग्रेट. मतलब शॉकिंग ही था थोड़ा बहुत. बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये हर ऑफिस में है, सिर्फ मेरे नहीं या सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के नहीं, हर ऑफिसेस में देयर इज एन एक्सेस लाइक दिस. And for my shock, someday I saw corporate email running for COVID awareness, and somebody promoted Dhruv Rathi's video. I was like, what is Dhruv Rathi's videos doing in office email communication? And I was very shocked. So even at high level corporate senior management category also, अगर ये लोग घुस पाते हैं through the PR या बोलो या marketing बोलो, I don't know what all they call all this, उधर भी घुस चुके हैं. So उनका aim ग्रास लेवल पे गरीब बोल के मतलब एक्सटॉर्ट या प्रॉब्लम करने वाले अलग है. क्रीम लेवल, सीनियर मैनेजमेंट लेवल, ऑफिसेस, व्हाइट कॉलर जॉब के सब जगह ये लोग वेरी स्ट्रेटेजिकली दे आर प्लेस्ड. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब अब हम पुलिस को बोलेंगे, हम कोर्ट्स को बोलेंगे, लेकिन इवन इन आवर नॉर्मल लाइफ विच वी थिंक कि इसमें अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सब जगह इन्फिल्ट्रेशन है. कहाँ से शुरू करें के लिए इट्स लाइक सो बैड इन स्टेट की शुरू कहाँ से करें, ऐसे बौखला जाता है. अगर किसी को कुछ करना भी है, ना कोई मदद है, ना कोई फंडिंग है, ना कोई एनकरेजमेंट है. अच्छा हम इस बारे में करेज दिखाएंगे तो उसको पागलपन बोल के डिस्कार्ड हो जाएगा बाय आवर ओन पीपल एंड बाय अदर्स ऑल्सो कि क्या क्रेजीनेस है, हैव यू गॉन मैड, ऐसे कर करके आउटकास्ट करना शुरू कर देंगे. तो शुरू कहाँ से करें वही समझ में नहीं आता कभी कभी. और फिर एक जगह देखेंगे मिशनरीज का प्रॉब्लम है, एक जगह देखेंगे पीसफुल्स का प्रॉब्लम है. सो एक्चुअली इट्स वेरी मतलब डिमोटिवेटिंग सिचुएशन. ना हेल्प है, ना कोई तरीका दिखता है, और जो भी छोटा मोटा अभी हो रहा है इट्स ऑल हैपनिंग इन आइलैंड्स. there is no collective efforts. We all say we have to do collectively, but where is that collection? Who is that leader? Where is that focal point? मतलब जहां पे एक आवाज पे 10 पीसफुल आ जाते हैं रास्ते पे. मैंने पर्सनली आई थिंक पहले भी शेयर किया है, बट हाँ, एक कॉल पे 10 लोग जमा होने वाले विद इन 5 seconds. दैट्स देयर यूनिटी. व्हाट डू वी हैव? मैं 1 घंटा भी बुलाऊंगी तो 2 लोग भी शायद नहीं आएंगे अगर रियल में हेल्प चाहिए तो. Where do we start? It's very... Ujjwal ma'am, we should keep on talking. We should keep on talking to each other and about these things as much as we can and every platform possible. तो उसमें क्या होगा, जो सरकारी हिंदू है ना, देखो मैडम आधे से ज्यादा प्रॉब्लम शिवानी जी वो सरकारी हिंदू या सेकुलर हिंदू की वजह से है ना. Correct, या correct. तो उनको शर्म आएगी या तो वो भागेंगे, और दूसरे जो सोए हुए हैं वो जगेंगे. और आपने बिल्कुल सही कही है कि भाई कीपिंग आर्म्स, जिसके पास आर्म्स हैं वो लीगल है, वो लीगली दादा है, उसके पास पावर है. अब जो कसाई है रोज बकरा काटता है, बकरा काटते काटते आदमी भी काटेगा, है ना. जो बोलता है भाई मैं तो भाला रखूंगा, तलवार रखूंगा क्योंकि मेरा धर्म कहता है, तो भाई वो किसी की भी कत्ल कर सकता है, किसी को आग लगा सकता है, गुरुद्वारे में काट के मार सकता है. तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है. इनफैक्ट अभी आई थिंक सतीश सिंह जी ने शायद एक कमेंट किया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस. बात तो बिल्कुल सही है. तो लाठियां पकड़नी पड़ेंगी हाथ में. वी शुड गेट रेडी. आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर कमिंग टू. वो कलारई पट्टू है ना अरुण जी, this gentleman, 95-year-old gentleman who has been awarded the Padma Bhushan or Vibhushan, हाँ उनको बुला के अभी सब लोग सब जगह अपना कलारे पट्टू का क्लासेस स्टार्ट करो. सर एक बात कलारी पट्टू के बोल रहे थे शिवानी जी, बिफोर आई जस्ट गिव अ स्मॉल टिडबिट्स, उसके बाद बोलता हूँ. एक कलारी पट्टू सिलम्बाटम, व्हाट वी कॉल इन तमिल विद द स्टिक्स, और ये सब को लेके जाके कुंफू में इंट्रोड्यूस करके कुंफू का एक सेपरेट फॉर्म बना दिए. एक्चुअली दे आर ऑल टेकन फ्रॉम हियर, एंड इफ यू वांट आई विल गिव यू द डेटा आल्सो. मैं डेटा भी नहीं बात नहीं करता हूँ, वो भी बोल देता हूँ, ठीक है. दूसरी मार्शल आर्ट में यूज्ड है. हाँ. yes.
सो एंड वी डोंट रेस्पेक्ट कलरीपयट्टू, वो सीख लो, कोई नहीं सीखेगा, ठीक है, वो डिफरेंट। दूसरी बात, आप बोले थे ना पीसफुल्स, आज वो एक नाम मिल गया दूसरों को बोलने, पीसफुल एंड लविंग। लविंग ये लोग हैं, पीसफुल्स ये लोग हैं, ठीक है, जो लव Correct. से ही सब कर रहे हैं ना, सो करेंगे। और द वन पॉइंट विच यू मेड, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल। ये आजकल का नहीं हो रहा है शिवानी जी, ये 70 साल का गंदगी है, 70 साल के ऊपर का गंदगी है। ये लोग स्ट्रेटेजिकली दे आर प्लेस्ड एवरीबडी। देखो पहले उसको कोटा दो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स आर बिल्ट एवरीवेयर, और माइनॉरिटीज के भी उसके भी 50% के ऊपर कोटा है। और काम में भी आप एमएनसी में हो ना, कॉर्पोरेट में हो ना, कॉर्पोरेट जी में जी. कोटा है, आपको जानते हो क्या? दूसरी बात I है, never knew. दूसरी बात है, दूसरी बात है, ये जो It's very subtle, but it is हाँ, there. इट इज देयर, सटल, ठीक है। There is for physically handicapped and LGBT nowadays. That I know. The other parts I एलजीबीटी don't know. विमेन भी है, देयर इज आल्सो देयर, दिस आल्सो इज देयर, ओके, सटल एज उज्जवल जी टोल्ड। मैं आई कैन नॉट टेल लाउडली, आई एम सेइंग दिस। दूसरी बात है, रिक्रूटमेंट टीम में ना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट, वॉच ऑल दोस, आपकी जो भी जहां पे भी हैं रिक्रूटमेंट टीम का देखिए जाके, जस्ट ऑब्जर्व देम, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सो फिल्ट्रेट करके अंदर आना, इजी थिंग, सो दे प्लेस एवरीबडी इन देयर। सो मैं जहां बैठा हूं, अगर मैं समझ लिया मैं बैठा हूं कहीं पे टॉप में, उज्जवल जी आ रहे हैं, ठीक है, शिवानी जी आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा, अरे यार अपनी बंदा है, ले लूंगा ना। दैट इज हाउ दे मैनिपुलेट, एंड दैट्स हाउ, बिकॉज दे कैन चेंज द सिस्टम। अंदर आए तो मैं चेंज कर सकता हूँ रूल को, पॉलिसीज को। See, I understand that rule for friends and relatives and maybe those who you know personally. ये जानना पहचान, but वो मनवाड़ू वाला फैक्टर आके बुला देंगे, ये नहीं अरे समझ आ रहा है. ऑल और देखो, यहाँ पे कौन से यमन में कोई झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे कोई इन लोग को क्यों दुखता है? इसराइल में कहीं हो रहा है, इनको क्यों दुखता है? ब्रदर यूनिवर्सल ब्रदर है, सिर्फ सनातन को नहीं है वो। यस, अमरावती का सनातनी भी इसको, जंगल हो गया था, हाँ अमरावती महाराष्ट्र में. हाँ, सनातनी इसको, अरे कौन सा कास्ट है, कौन सा रीजन है, कौन सा इसमें, वैसे में चले जाएंगे। हमारे नेबर में कुछ हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, कैसा प्रॉब्लम है ये? दैट इज द थिंग, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक, है ना। I सो do feel, yeah, या, till we find any way, I think speaking out also, because that is also यस missing. यस, Correct. देखो इन आर चैनल इफ यू लुक एट इट, सोनिया जी भी हो, उज्जवल जी भी है, मैं भी हूँ, आप जैसे लोग भी जो आते हैं ना, वी आर नॉट मिंसिंग वर्ड्स, है ना, बिकॉज बहुत सारे चैनल्स सुपरफिशियली जा जाके ट्राइंग टू शुगर कोट एवरीबडी, सभी को कुछ रोकना नहीं, नहीं तो They also have, लावण्यस बहुत सारे लावण्यस आएंगे इसके बाद, इफ यू डोंट टॉक they अबाउट have policy of let's not take the names. वहां से शुरू हो जाता है बाकी portals में. So yes, it's glad that there is a free talk here. Shivani ji, you were talking about why corporates promote this. You know, the corporates have certain clients. When these clients they invest into you, what you have to do is, do them some favors. So ये जो ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, इनको स्पेसेस खरीद के दे जाते हैं, चाहे वो ट्विटर में हो या चैनल्स में हो या आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म. These are called the corporate gifts for these people. और जब आपको कोई प्रोपेगेट करता है इस तरह से, तो आप सोचिए कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वरना you know what he talks, right? That's We know true. what That's true. Even in annual events in offices, those comedian kind of chaps keeps coming. जो बाकी कहीं उनको टिकट सेल नहीं होते, comedians, these infamous Stand- comedians, yeah, उनको as a stand guest बुलाया जाता है. exactly. So this is my personal experience I have seen in the corporates. They give these spaces to these people. So जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में या कोई प्रोजेक्ट का परसेंटेज डिवाइड होता है, तो they say that you have to buy this space for this guy for us. That is what your role is gonna be. So जो एडवर्टाइजमेंट टीम होती है, चाहे वो ट्विटर की हो, चाहे वो फेसबुक की हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स की हो,
इस तरह से ये वर्क करते हैं। बट आप देखेंगे, अगर हम बोलेंगे कि आज हम हिंदू सनातन धर्म पे कुछ बात करेंगे, तो ऑल दीज कॉर्पोरेट्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड, because their investment, where it is coming from, doesn't support that propaganda of talking about Hinduism. Correct. So there is where we lack. टॉकिंग अबाउट सनातन इज कंसिडर्ड एज, अगर सनातन के बारे में अगर कोई आके यहाँ पे जय श्री राम नहीं तो हर हर महादेव बोले तो उनको रिग्रेसिव लगेगा। इट इज सेम थिंग दे कैन से हेल व्हाटएवर। तो वो फॉरवर्ड थिंकिंग है, वो दिमाग में बिठाया गया इन लोगों को। हम बोलिए। Now, what I'm going to say is maybe it's flowing out of Lavanya case details and discussion so far, है ना? मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि we are in the same situation in what the Jews found themselves in 1947-48. Yeah, they started migrating to Palestine and this place in, I think, 1943, 44, 45. They started doing that, I think around 45. And in a big way in 45, it started, I think, 43, 44, in a smaller way. From other places, from Germany also and other places in Europe, Eastern Europe, they started migrating big way in 1945 onwards. Okay. So they had nobody, no friends. Yeah, everybody wanted to get rid of them. Yeah, even the Western powers. Yeah, Jew was supposed to be a bloody hated community. Yeah, a hated person everywhere, even in Europe, earlier also. So, but then they banded together. They kept their beliefs strong, and then they started working together. So when you start working together, it takes you some time to get together, bond together, and become a force. But once you receive that, cross that threshold, then you are in a driving position. So this is the position in which Sanatan Dharma and Sanskriti is in India today. And I'm sure going forward we will, जितना हम बात करेंगे ना, उतना हमारी शक्ति बढ़ेगी, उतना सामने वाले थोड़ा सा नीचे होएंगे, शांत होएंगे। और ये जो सेकुलर सरकारी हिंदू हैं, वो फिर सही में हिंदू बनने की कोशिश करेंगे। तो जरूरी ये है दोस्तों कि इस समय हम शुड पूरा गला फाड़ के, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको चांस मिलता है, बैट फॉर सनातन, एडवोकेट, propagate, preach, whichever way you find that you are useful, you must play your role. Yes. Thanks. Tried that in people in area around my house or things, so started getting backlash also. I had a house help near my house, so the lady was Christian since birth or whatever from her childhood, but the guy was husband was Hindu. So I was interested to know, are they as such, because every day evening they have that prayer thing going on. So I was interested to know, has husband converted? I just asked her casually while working. So then she said, नहीं मैंने उसको कभी नहीं बोला, वो अपना शादी के टाइम पे they had a Hindu marriage, as he said, that time he was not converted, and later on they had two kids. So eventually in one of the kid the situation, health was not going well. So in that soft moment she found out a way that if we lean towards Yeshu, he will save us from this situation. Look at our kids and future, so it you have to do for them, not for me. I never asked you. So I don't know if she was trained to do that or it was her innocent thinking. I have no clue, but it looks very fishy because she is under very much good influence from her native pastors and all that. And every month without fail I used to help her with I mean, I felt bad now. Now I'm feeling bad, but I used to help her with her dashami every month to send it via GPay or something. Now I'm feeling, why did I do that? But okay, things to So learn. Shivani ji, one thing you remember, they are MLMs. Trust this, they are MLMs. एक के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, those people, they are their carriers now. समझ लीजिए, they are like MLMs छोड़ दीजिए, वायरस बोलते हैं। Virus. कोविड कैसे स्प्रेड हुआ? एक को आएगा, that person will spread to 3, those people will spread to 3.
cluster वैसा ही starts. है. So every person who is converted, they are the vectors, they are the hosts who are going to spread it. वो याद रखिए. And one more study, ये study है, report का study है, बोला गया कि it is not people who are like ancestrally से जो faith follow कर रहे हैं ना, उन लोगों को ज्यादा नहीं करते हैं. ये जो अभी recent converts ना, उनको ये ज्यादा ये बीमारी पड़ी है कि जाके स्प्रेड करें, बिकॉज उनको ही है ना, दे आर पीपल हु हैव बिकम रिच, दे हैव स्टोन द मनी, और पैसा चाहिए उनको. That thing नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है वाला. एग्जैक्टली वैसा है उनको. इवन इफ यू सी लुक एट द इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट को भी देखेंगे तो उनका ग्रैंडफादर देखो, ग्रैंडमदर देखो, हिंदू नाम रखेंगे. अभी अभी एक कि मैं आई एम बाबर्स ग्रैंडसन बोल के बोलने वाले हैं. आई डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. या Yeah, the Arun, maid and husband couple I told, they are still using Hindu names, both of them. Surprisingly, kids yeah, are that also is Hindu names. that is what I think what needs to be done is, there has to be a proper process and a common process and a law, a very strict law which prevents this. And if anybody converts, then it should be escalated and flashed everywhere in every phase of their life. They should not be able to avail any facility which is not supposed to be done. That is one thing. Secondly, क्या है अरुण जी, आपने जो बोला ना, the people are नया converts है and all that, they see and all that. About a month back, I was reading about a case from Chennai. There was a state government employee, that fellow retired, very good, stout Sanatani person. Okay, he had 3 kids. Okay, I think 2 sons and 1 daughter or something. Huh? तो वो सन्स को तो एक को सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा ने फंसा लिया, है ना, एक को किसी और ने फंसा लिया, है ना. सो हनी ट्रैपिंग और व्हाटएवर यू कॉल इट. या देन अब वो एक्सटेंडेड फैमिली उनका हो गया. They did not, they went against their father's wishes. Father said, your mother is no more. I'm alone here. You people are getting married against my will. Then how can you go and marry a Christian? And then they later on converted also. First step was marriage. First step was going around, trapping, marriage, and then conversion. And once the 2 guys had converted, they even their sister also fell under that extended umbrella. She also converted and married a Christian. So this fellow, out of sheer frustration and anger, he said, I will not let you have a single paisa of my property. He wrote that entire property of his, real estate worth crores in Chennai to the nearest temple. वो जो HRNC का जो ट्रस्ट है ना, he is handed over. तो ऐसा भी होता है. And you know sir, why he did that also, वो केस में भी पढ़ा था. He also, one of the interviews he has told that अगर मैं उनको प्रॉपर्टी दूं, ठीक है ना, उसमें से 10% कहाँ जाएगा? It is their duty, no, to give 10% to their religious organization. ये बोलता है मैं उसको क्यों दूं, मैं अपने भगवान को दे दूंगा बोल के अपने फैमिली डेटी को दे दिया है पूरा. So that is the frustration they push you into. Yes. And actually the problem is कि हमारे मर्जी के खिलाफ कन्वर्ट किया है ये भी नहीं है. वो आपको मनवा देंगे कि आपने अपने खुशी से किया है. So there's no case until unless you stand for against it, right? So वो बोले नहीं मैं अपनी खुशी से गया हूँ, ऐसे बोल के हो जाता है सेटल उधर. एक मैं जजमेंट पढ़ता हूँ सोनिया जी को, मे बी शी नो अबाउट इट. 2019 अगस्त में आया था ये जजमेंट बाय जस्टिस एस वैद्यनाथन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. इट इज नॉट मेरा कुछ का नहीं है, ना उज्जवल जी का, ना सोनिया जी का है, ना शिवानी जी का. उन्होंने बोला, दो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस आर imparting good education, their preaching of morality will be
$1 million question. The preaching of morality will be $1 million question. He said Christian institutions have become unsafe for girl children. 2019 का judgment है, पढ़ लीजिए, because he saw a lot of such criminals happening. So I don't know. Probably we can continue it in a later session. It's already 2 hours. So Sonia ji, Ujjwal ji, any thoughts on this, or we can wind up for today? Your final thoughts, Ujjwal ji. अरुण जी, लास्ट में मैं दोस्तों के साथ और आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो टिल द सोल्स आर हार्वेस्टेड, वो थोड़ा बहुत आपको I think probably आपके ये Maybe I'll say something till he comes back. हाँ जी, अब I did not mention, since I have joined, about Lavanya. The initial part you told about this, I didn't know about the case fully. So it was already as a headline, it was sad news, but knowing more has been much more, it's very heavy on heart and it's sad. मतलब हमारे ही बाजू के गांव में इस तरह हो रहा है, ये फीलिंग आया कि we are in the same country, but how every place is so different, and how fortunate we are with our surroundings, but how unfortunate other people can be, and that fate can be. So it is as good as जहाँ war zone हो रहा है अभी इजराइल में या जिधर भी हो रहा है in on the planet, it's as good as that situation for them in their surrounding. So overall we might be as a free country, but us area mein it's not stable, it's not peaceful, it's not smooth. So I think we should declare that as a war zone. Conversion areas are nothing but war zones, and we should actually tackle them on that front instead of trying to mend anything, convince anybody, take a soft note. I don't think we need that. So it's very sad, and I know when you say more and more is still gonna happen, there is no end to it, but it has to stop. It has to slow down at least somewhere. It's very sad. So thanks for sharing the details. Thank you, Shivani ji. And when I'm saying more and more, if we don't take action, what you told is right. Because भाइयों बहनों, सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ. Think Lavanya today. आपके बच्चों, आपके brothers, आपके nephew, आपके niece के बारे में सोचिए. बस. Then you will buy. Thank you, Shivani ji. Thank you. फिर से छूट गए हैं. जय भारत, जय श्री राम. उज्जवल जी, आप बोलिए. Then Sonia ji, then I'll end it. Sorry, can you people hear me clearly? Yes, sir. Okay. I'm so sorry that tab ran down, completely on the battery. So, dosto, what I was going to say, maybe we need to have another discussion in which we'll give more chances for other people to air their views. And we can tell them the day and date today itself, Sonia ji and Arun ji, if you agree, so that people will come prepared and they will keep that time aside. Yeah, because we need to see more facets of this case, and if possible, any similarities with any cases or experiences which people want to share, we should be happy to take them on in the next session. और बाकी बहुत बड़ी छोटी सी बात मैं बोलना चाहता था अरुण जी. One fundamental truth, especially with these black, white and brown, white people, yeah, the loving so-called fathers and so-called mothers and so-called sisters and so-called brothers. Okay, these people, till your soul is harvested, till they convert you, they may give you some benefit, some monetary benefit or some help in admission or some job or something. Once you convert, once you are already converted, your family is converted, then they don't even bother for you. I have so many of my Christian friends who Anglo-Indians and all that, they should be enjoying a slightly better, benefit in the pecking order. But even they also were totally helpless and at the mercy of these bishops and these fathers of the church, who would never help them.
In spite of great situation, they would never help me. This I've seen with my own eyes in India itself. So एक बार आप कन्वर्ट हो गए, आपका फैमिली कन्वर्ट हो गया, उसके बाद दे डोंट केयर, है ना. बस आपको चर्च में आना है, वो टिप्स डालना है कैप में, हेड के अंदर, बस ऐसा करते रहने का. आई एम टेलिंग यू, इट्स बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस. I had a driver who was on very hard times. So I had taken him and his wife, two of them together. I just bought them some rations for 2-3 months, and then after that I told them, they were feeling grateful. They started talking to me. I ate with them. Said, okay, two of you come out. We will have a meal together. So we were eating. Then they said, sir, you are so helpful and kind, but we can't touch you on every 2 months for rations and all that. Okay, look, that is not the point. Why isn't the church helping you? Why isn't the pastor helping you? You have a parish. You belong to a particular parish. There is a pastor in that parish. There is a church. Yes, sir. It's all there, right from our father's times. Then let's go. No, sir. They will never. These pastors, they will abuse us. They will curse us and abuse us. They will kick us out. They will never help us. I'm telling you, सोनिया जी, अरुण जी, शिवानी जी एंड दोस्तों, मैं वो दोनों को लेकर गया. मैंने कहा नथिंग विल हैपन, आई एम देयर. फिर मैंने जाके वहां पे उनसे बात किया. Look, these people are having very hard time. They've got 3 children. The husband earns a pittance. He hardly earns about maybe 5,000 rupees or 6,000 rupees a month, which is certainly not enough in that particular country. The wife also earns something similar, but it is not enough. They eat only once. And I have seen them go for days together, 18 hours, 14 hours with chewing on the wood. I've seen them do that. So can you help them? So that guy, he heard me very patiently. Then he said, Oga, sir, you are a white man. He said, no, I'm not a white man. Yeah, I am as brown or as black as you are. This is not a white man's burden. No, I am here, I am telling you, as a person, as a human being. Like, no, sir, if I help one, 10,000 will come. Nobody is going to help me. So I am not going to help anyone. It is up to them. They want to come to the church, let them come. They don't want to come, they don't let them not come. I care 2 votes. And thank you very much, sir, for your time. बताओ अरुण जी, ऐसा कोई मिशनरी और पास्टर आपको ट्रीट करेगा, कैसा लगेगा आपको? दिस इज द रियलिटी. बहुत धन्यवाद. आपने सच्चाई को मुंह पे मारा है. People have to realize it still, but शायद it will take time, but we will keep shouting. सोनिया जी, आपकी ये last words, please. Ending comments. Thank you, Ujjwal ji and Arun ji. Yeah, all the points were covered, but yes, as you rightly said, we have to keep talking because there's no other way. We don't have any other way to solve this problem. And yes, people who come and ask you for the vote, do ask them what they are doing. Ask the government, ask the people the right questions to right people, and raise your voice always. That's what I wanted to say. Because I don't know how many times such incidents happen and we never raise our voice. Every time it goes under the carpet. एक लावण्य चली गई, दूसरी भी चली जाएगी, तीसरी भी चली जाएगी, जिससे इतनी बात हुआ. But I think it's a wake-up call for all of us, and we should keep it in mind and keep asking justice for everyone. Justice किसी की भी जागीर नहीं है, justice सबके लिए है, and every citizen of this country has a right. So on that note, thank you guys for doing an amazing session again, for covering these points and showing people and explaining people what it is, not from what the Dikahua media shows us. And hope things will get better. And we as citizens also do our duty properly. So
Thank you everyone for joining. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev, and Jai Hindu Rashtra. बहुत धन्यवाद सोनिया जी. या बिफोर आई गिव माय फाइनल थिंग एक दिखाता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ. व्हेन वी टॉक अबाउट माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, आप ये देखो, दिस इज सिंपल थिंग. जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में जो कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं, है ना, और इससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, what is allowed in minority and what is allowed in the majority institutes, है ना. Aid provided, no religious instruction allowed, applies no such restriction, no such restriction, no such restriction for everything in minority institutes. Last में religious teaching allowed, no, but yes in the minority institutes. So this is what we have been trying to tell you. So हमारे पास जो है उसको हमको ही संभाल के रखना पड़ेगा. We have supposed to keep it right. And as Ujjwal ji was mentioning, as Sonia ji was also mentioning, घर से ही स्टार्ट करो. सनातन को सिखाना घर से, बिकॉज आप स्कूल से बिलीव मत करो, स्कूल में नहीं हो सकता है. तो घर से ही स्टार्ट करो. इंस्टिल देयर कल्चर्स एंड राइट, जो भी हम करते हैं ना, एक्सप्लेन देम, तभी होगा. वंस दैट इज स्ट्रांग, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू कन्वर्ट. और सोनिया जी बोल रहे थे, जैसे बोल रहे थे, have a close watch on your kids when they go to the school. ऐसे नहीं कि स्कूल में छोड़ दिए बच्चे, नहीं. Schools are one place where you should be very, very careful on, because there is considered as a second home, right? They spend around 8-9 hours there. वहाँ क्या होता है हमको पता भी नहीं चलता है. So have a close watch on the schools. अपने बच्चों के बारे में जब सोच रहे हैं, these are the things which we miss. छोटा छोटा सा, you see the change in the behavior, the way they talk, the way they respond to your questions. वो सब अगर difference पता चलेगा, please sit with your kids, talk to them, understand what is going on. Because मेरे हिसाब से ये बच्चे लावण्य जी को the parents से बातें करना नहीं दिया, नहीं तो otherwise parents would have found out the torture. बच्ची भी नहीं बोलना चाहती थी, because for her education was everything for her, and she was caught between that is why I'm saying her, she's a dharmic warrior. जब लोग बोलते हैं कि अपनी पुराने जमाने में there were people who refused and they were killed, conversions, right? She did the same thing. मैं आपको एजुकेशन दूंगा, सब दूंगा, कन्वर्ट हो जाओ. She told no, but she still wanted the education. तो दोनों साइड में she was caught up and she had to commit this, boss. Understand the amount of torture, psychological torture that kid would have undergone. So we don't want such Lavanyas again. लावण्या फिर से कभी भी नहीं होनी चाहिए. उसके लिए हमको जागना पड़ेगा. हमको कोई कहीं पे भी दिखेगा ऐसा लावण्या जैसा कोई और, it need not be only only I'm saying the gender wise, it be any guy also. I've read so many examples of guys, kids also, बच्चों भी कर रहे हैं, कोई भी है. If you find something, please approach them, speak to them, try to speak to their parents, try to speak to the proper authorities, correct them, because ये जब हमसे ही हो सकता है. अरे as I think शिवानी जी was saying, दूसरों के घर में हो रहा है, हमारे घर में नहीं होगा. नहीं, it doesn't take much time. I'm telling you, these are all like corona to spread from your neighbor to you. It doesn't take much time. वैसा ही ये भी है. तो nobody is safe. We have to prove our own safety. सेफ्टी के लिए हमको पूरे मोहल्ला को वैक्सीनेट करना पड़ेगा. सिमिलरली हम पूरा मोहल्ला के ऊपर we have to have a nazar, otherwise we are not safe. So with that, please raise voice for Lavanya and many more like Lavanya. Generally, as Ujjwal ji and Sonia ji even specified also, justice के लिए आवाज उठाइए. Don't be partial or biased toward justice. Justice cannot be biased. Justice cannot be blinded. आप
खुले दिल से सही या गलत को आप देखिए, परखिए, उसके बाद आप आइए। इसमें न मैं सिर्फ इसको करूंगा, इसको नहीं करूंगा, देन यू आर नॉट बीइंग हॉनेस्ट बॉस, यू आर नॉट बीइंग हॉनेस्ट। देन खुद को जस्टिस वॉरियर्स मत बुलाइए, है ना। विद दैट आई डोंट नो, अदर सेशंस अभी थर्सडे के लिए भी होगा। विल सून अनाउंस इट इन द ट्विटर के माध्यम से, नहीं तो टेलीग्राम के माध्यम से विल अनाउंस इट एंड विल लेट यू नो सून। बहुत सारे सेशंस प्लान्ड है, इंटरेस्टिंग सेशंस इसके बाद भी। लावण्या जी की किसको और भी बढ़ा सकते हैं एंड विल टॉक अबाउट मोर इफ एनीथिंग न्यू हैपेंस, एंड उस थोड़ा हिस्ट्री भी हम और टचअप कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। अंटिल देन सोनिया जी, उज्जवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग मी एंड joining us all for this special session, which I consider is needed, very much needed for all you people, lovely people who have joined and supported, shown your support, and just at least watched. Please continue to support. If you like, because in this case, usually we don't tell it, but I would say, please, if you like it, please share so that it reaches more people and more people know about Lavanya. More people also recognize it, and then probably आवाज भी और बुलंद हो जाएगा। बिकॉज हमारा जो भी सेशन होता है, वी आर ऑल ओनली इन द पार्ट ऑफ एनलाइटमेंट, वी जस्ट दूसरों को बताने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स आल्सो। हमारा ट्रू टेलर्स का चैनल भी है, आई मीन टेलीग्राम भी है, ट्विटर भी है, कहीं से माध्यम से। लेकिन सोनिया जी का, उज्जवल जी का, मेरा ट्विटर का मैसेजेस भी, पर्सनल मैसेज भी खोले हैं सबको भी। जो भी मेरा हमारे व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, यू कैन मैसेज अस एनीवेयर, we will take your opinions and whatever you want to discuss on your thoughts also we'll discuss about it, ठीक है। with that, finally, Jai Bharat, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev, and as Sonia ji rightly mentioned, Jai Hindu Rashtra. We should keep feel proud and be bold to tell this. Jai Hindu Rashtra. गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो है ना? हिंदू है।